How would I know? कैसे 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 मुझे पता चलेगा? कैसे 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 मुझे पता चलेगा? Anyway. एक सेकंड दोस्तों. Welcome to another day of क्या है ये? What do I stream? Yeah, welcome to another day of streaming. Long day. कल हम लोग एक नया चीज स्टार्ट किया अपने स्ट्रीम में. We have started book reading. I like that already, and I just thought I should plug in the same into my stream. I've always loved reading books. और पता नहीं book reading में जो मजा है ना, विजुअल मीडिया में जो भी फन हो, आई एग्री बहुत सारा फन होगा विजुअल मीडिया में, बट देयर इज नो डिनाइंग कि बुक रीडिंग में जो फन है उसका एक अलग मजा है भाई. आई मीन the imaginative power it allows you, the creativity it allows you to think, to process what you're reading, to help you imagine कि तुम जो देख रहे हो उसका क्या सीन है भाई. हम पढ़ रहे हैं, अच्छा ये 4 लाइन, बट मेरे दिमाग में एक अलग प्रोसेस चल रहा है. In my mind I read he went from there to there, he saw birds over there, the sun was shining brightly, and he knocked on the door, and as soon as the door opened he was stunned. Chapter ends. But in my mind it's not just that. In my mind it's like उठा है, जाना है उसको उस जगह पे, उसको पता नहीं है वहां पे कौन होगा, तो उसका हम सोच रहे हैं कि उसका आँख कैसा है उस समय, what kind of body language that person is having, is that person changing, is that person eating, is that person I don't know, reading books. So how it actually turns out to be, the things I read, the things then I then imagine about the things I read, it just changes your perspective on how you perceive things. And I don't know, it's fun, man. Book reading is fun. It should be something that everybody should do. So hopefully, yes, let's see. Let me click a quick picture of this stream. I'll put it on my Instagram story and then we'll start with our book reading. Okay, अभी 17 सेकंड के बाद आएगा. हाँ, and then I'll click a picture. Okay. Okay, clicking in 5, 4, 3, 2, 1. हंस भाई ऋषभ, हंस हंस हंस. हाँ. Okay. Okay. Dude, putting up stories on Instagram is a whole task in itself, I tell you.
That was a big ass Instagram story I put up. Yes, let's go. कल हम लोग 3 chapters पढ़े. The first was the worst birthday. Harry in the house at Privet Drive, just being mentally harassed. Although he has gotten used to it and he knows pretty much how to zone it out, drown it out, and just be out of it. Second was Dobby's warning. Harry met a house elf called Dobby. Dobby was weird. Dobby was weird, but okay. Dobby had his moments while he was there. Hopefully, we see a lot more of him. We don't know. So, while we are at it, just a second. Yes, there it is. There we go. There we go. There we go. Yes, let's go. ठीक है? Okay, let's go. So, and then the third chapter, we read that because of Dobby, big commotion was created in the Dursleys' house, and people had come over whom the Dursleys wanted to impress. That did not happen because Dobby and Harry then was like, oh, and then Ron was like, oh, and then Harry was like, and then Ron was like, come on, and then Harry was like, how? And then they were like, we'll do this, we'll do that, we'll go and get your stuff, we'll use Muggle techniques to open locks, not Alohomora, we'll do lock picking. So they did stuff, they flew, they talked, कि अरे ये हुआ and Ron was like, अरे हम तो लेटर भेज रहे थे, तुम आ नहीं रहा था, मैं तो फट रहा था, हम तो बोले अरे वाह कुछ हो गया इसको जा रहे देखने के लिए. And then George and Fred were just having fun. They were like, yeah. And then they got home. They were like, अरे मम्मी से बच के चलती थी, जाके सब अपने बेड में छुप जाओ और अचानक से निकलना अपने रूम से, बोला अरे हैरी कहाँ से आ गया. बट वो लोग घर में घुसने वाला था, तब तक मॉली वीजली वो लोग को पकड़ ली गार्डन में, मम्मी उनकी. And then like full थुड़ाई, except मारती नहीं हो, so verbal थुड़ाई पूरा जम के, but obviously because Molly Weasley, so Fred, George, Ron, oh Harry, sweet boy. So Molly being Molly. And then they were having breakfast. They had breakfast. They denomed the garden. They were just chilling here and there while. And then Arthur Weasley dropped in. And I don't know. After that, they talked a bit, and he tried to mock scold them that, oh no, you should have not flown the car, and blah, 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 blah. Anyway, so this is what happened. And then Harry went into Ron's room and then saw everything, Chudley cannons and whatnot. So now we'll read the next chapter, which is at Flourish and Blots. How long is this chapter? I don't think I'm gonna read the full chapter. Oh my god, this is a huge chapter. Oh yeah, it's a huge chapter. It's more than 20 pages. Okay, हम लोग पढ़ेंगे till the time Harry does diagonally. Okay. At Flourish and Blots. Life at the Burrow was as different as possible from life in Privet Drive. The Dursleys liked everything neat and ordered. The Weasleys' house burst with the strange and unexpected. Harry got a shock the first time he looked in the mirror over the kitchen mantelpiece, and it shouted, "Tuck your shirt in, Scruffy!" The ghoul in the attic howled and dropped pipes whenever he felt things were getting too quiet, and small explosions from Fred and George's bedroom were considered perfectly normal. What Harry found most unusual about life at Ron's, however, wasn't the talking mirror or the clanking ghoul. It was the fact that everybody there seemed to like him. Mrs. Weasley fussed over the state of his socks and tried to force him to eat 4 helpings at every meal. Mr. Weasley liked Harry to sit next to him at the dinner table so that he could bombard him with questions about life with muggles, asking him to explain how things like plugs and the postal service worked. "Fascinating," he would say, as Harry talked him through using a telephone. Ingenious, really. How many ways muggles have found of getting along.
without magic. Harry heard from Hogwarts one sunny morning about a week after he had arrived at the burrow. He and Ron went down to breakfast to find Mr. and Mrs. Weasley and Ginny already sitting at the kitchen table. The moment she saw Harry, Ginny accidentally knocked a porridge ball to the floor with a loud clatter. Ginny seemed very prone to knocking things over whenever Harry entered a room. She dived under the table to retrieve the bowl and emerged with a face glowing like the setting sun. Pretending he hadn't noticed this, Harry sat down and took the toast Mrs. Weasley offered him. "Letters from school," said Mr. Weasley, passing Harry and Ron identical envelopes of yellowish parchment, addressed in green ink. "Dumbledore already knows you're here, Harry. Doesn't miss a trick, that man. You've got two of them, too," he added, as Fred and George ambled in still in their pajamas. For a few minutes there was silence as they all read their letters. Harry told him to catch the Hogwarts Express as usual from King's Cross Station on September the 1st. There was also a list of the new books he'd need for the coming year. Second year students will require the Standard Book of Spells, Grade 2 by Miranda Goshawk, Break with a Banshee by Gilderoy Lockhart, Gadding with Ghouls by Gilderoy Lockhart, Holidays with Hags by Gilderoy Lockhart, Travels with Trolls by Gilderoy Lockhart, Voyages with Vampires by Gilderoy Lockhart, Wanderings with Werewolves by Gilderoy Lockhart, and Dear with the Tetty by Gilderoy Lockhart. Man, Lockhart was everywhere. Just a quick second. Somebody Somebody was pinging me. Fred, who had finished his own list, peered over at Harry's. "You have been told to get all Lockhart's books too," he said. "The new Defense Against the Dark's teacher must be a fan, but it's a witch." At this point, Fred caught his mother's eye and quickly busied himself with the marmalade. "That lot won't come cheap," said George with a quick look at his parents. "Lockhart's books are really expensive." "Well, we'll manage," said Mrs. Weasley, but she looked worried. "I expect we'll be able to pick up a lot of Ginny's things second hand." "Oh, are you starting at Hogwarts this year?" Harry asked Ginny. She nodded, blushing to the roots of her flaming hair, and put her elbow in the butter dish. Fortunately, no one saw this except Harry, because just then Ron's elder brother Percy walked in. He was already dressed, his Hogwarts prefect badge pinned to his tank top. "Morning, all," said Percy briskly. "Lovely day." He sat down in the only remaining chair, but leapt up again almost immediately, pulling from underneath him a molting grey feather duster. At least that was what Harry thought it was until he saw that it was breathing. "Errol!" said Ron, taking the limp owl from Percy and extracting a letter from under its wing. "Finally, he's got Hermione's answer. I wrote to her saying we were going to try and rescue you from the Dursleys." He carried Errol to a perch just inside the back door and tried to stand him on it. But Errol flopped straight off again, so Ron laid him on the draining board instead, muttering, "Pathetic." Then he ripped open Hermione's letter and read it out loud. "Dear Ron and Harry, if you're there, I hope everything went all right and that Harry's okay and that you didn't do anything illegal to get him out, Ron, because that would get Harry into trouble too. I've been really worried, and if Harry's all right, will you please let me know at once? But perhaps it would be better if you used a different owl, because I think another delivery might finish your one off. I'm very busy with schoolwork, of course." "How can she be?" said Ron in horror. "We are on holiday, and we are going to London next Wednesday to buy my new books. Why don't we meet in Diagon Alley? Let me know what's happening as soon as you can. Love, from Hermione." "Well, that fits in nicely. We can go and get all your things then too," said Mrs. Weasley, starting to clear the table. "What are you all up to today?" Harry, Ron, Fred, and George were planning to go up to the hill to a small paddock the Weasleys owned. It was surrounded by trees that blocked it from view of the village below, meaning that they could practice Quidditch there as long as they didn't fly too high. They couldn't use real Quidditch balls, which would have been hard to explain if they had escaped and flown away over the village. Instead, they threw apples for each other to catch.
They took it in turns to ride Harry's Nimbus 2000, which was easily the best broom. Ron's old shooting star was often outstripped by passing butterflies. 5 minutes later, they were marching up the hill, broomsticks over their shoulders. They had asked Percy if he wanted to join them, but he had said he was busy. Harry had only seen Percy at mealtime so far. He stayed shut in his room the rest of the time. Wish I knew what he was up to, said Fred, frowning. He's not himself. His exam results came the day before you did. 12 owls! And he hardly gloated at all. Ordinary visiting levels, George explained, seeing Harry's puzzled look. Bill got 12 too. If we are not careful, we'll have another head boy in the family. I don't think I could stand the shame. Bill was the oldest Weasley brother. He and the next brother Charlie had already left Hogwarts. Harry had never met either of them, but knew that Charlie was in Romania, studying dragons, and Bill in Egypt, working for the Wizards Bank, Gringotts. Don't know how Mum and Dad are going to afford all our school stuff this year, said George after a while. 5 sets of Lockhart books, and Ginny needs robes and a wand and everything. Harry said nothing. He felt a bit awkward. Stored in an underground vault at Gringotts in London was a small fortune that his parents had left him. Of course, it was only in the Wizarding World that he had money. You couldn't use galleons, sickles, and nuts in Muggle shops. He had never mentioned in his Gringotts bank account to the Dursleys. He didn't think their horror of anything connected with magic would stretch to a large pile of gold. Mrs. Weasley woke them all early the following Wednesday. After a quick half a dozen bacon sandwiches each, they pulled on their coats, and Mrs. Weasley took a flower pot off the kitchen mantelpiece and peered inside. We're running low, Arthur, she sighed. We'll have to buy some more today. Ah, well, guests first. After you, Harry dear. And she offered him the flower pot. Harry stared at them, all watching him. What am I supposed to do? He stammered. He's never travelled by flue powder, said Ron suddenly. Sorry, Harry, I forgot. Never? Said Mr. Weasley. But how did you get to Diagon Alley to buy your school things last year? I went on the underground. Really? Said Mr. Weasley eagerly. Were there escalators? How exactly? Not now, Arthur, said Mrs. Weasley. Flue powder's a lot quicker, dear, but goodness me, if you've never used it before. He'll be all right, Mum, said Fred. Harry, watch us first. He took a pinch of glittering powder out of the flower pot, stepped up to the fire, and threw the powder into the flames. With a roar, the fire turned emerald green and rose higher than Fred, who stepped right into it, shouted Diagon Alley, and vanished. You must speak clearly, dear, Mrs. Weasley told Harry as George dipped his hand into the flower pot. And mind, you get out at the right grate. The right what? Said Harry nervously, as the fire roared and whipped George out of sight too. Well, there are an awful lot of wizard fires to choose from, but as long as you have spoken clearly, he'll be fine, Molly. Don't fuss, said Mr. Weasley, helping himself to flue powder too. But dear, if he got lost, how would we ever explain to his aunt and uncle? They wouldn't mind, Harry reassured her. Dudley would think it was a brilliant joke if I got lost up a chimney. Don't worry about that. Well, all right, you go after Arthur, said Mrs. Weasley. Now, when you get into the fire, say where you're going and keep your elbows tucked in and your eyes shut, said Mrs. Weasley. The suit? Don't fidget, said Ron, or you might you might well fall out of the wrong fireplace. But don't panic and get out too early. Wait until you see Fred and George. Trying hard to bear all this in mind, Harry took a pinch of flue powder and walked to the edge of the fire. He took a deep breath, scattered the powder into the flames, and stepped forward. The fire felt like a warm breeze. He opened his mouth and immediately swallowed a lot of hot ash. Diagon Alley, he coughed. It felt as though he was being sucked down a giant plug hole. He seemed to be spinning very fast. The roaring in his ears was deafening. He tried to keep his eyes open, but the whirl of green flames made him feel sick. Something hard knocked his elbow, and he tucked it in tightly, my bad. Still spinning and spinning. Now it felt as though
Cold hands were slapping his face. Squinting through his glasses, he saw a blurred stream of fireplaces and snatched glimpses of the rooms beyond. His bacon sandwiches were churning inside him. He closed his eyes again, wishing it would stop, and then he fell, face forward, onto cold stone and felt his glasses shatter. Dizzy and bruised, covered in soot, he got gingerly to his feet, holding his broken glasses up to his eyes. He was quite alone, but where he was, he had no idea. All he could tell was that he was standing in the stone fireplace of what looked like a large, dimly lit wizard shop. But nothing in here was ever likely to be on a Hogwarts school list. A glass case nearby held a withered hand on a cushion, a blood-stained pack of cards, and a staring glass eye. Evil-looking masks leered down the walls. An assortment of human bones lay upon the counter, and rusty, spiked instruments hung from the ceiling. Even worse, the dark, narrow street Harry could see through the dusty shop window was definitely not Diagon Alley. The sooner he got out of here, the better. Nose still stinging where he had hit the hearth, Harry made his way swiftly and silently towards the door. But before he had got halfway towards it, two people appeared on the other side of the glass, and one of them was the very last person Harry wanted to meet when he was lost, covered in soot and wearing broken glasses. Draco Malfoy. Harry looked quickly around and spotted a large black cabinet to his left. He shot inside it and pulled the doors to, leaving a small crack to peer through. Seconds later, a bell clanged, and Malfoy stepped into the shop. The man who followed could only be his father. He had the same pale pointed face and identical cold grey eyes. Mr. Malfoy crossed the shop, looking lazily at the items on display, and rang a bell on the counter before turning to his son and saying, "Touch nothing, Draco." Malfoy, who had reached for the glass eye, said, "I thought you were going to buy me a present." "I said I would buy you a racing broom," said his father, drumming his fingers on the counter. "What's the good of that if I'm not in the house team?" said Malfoy, looking sulky and bad-tempered. "Harry Potter got a Nimbus 2000 last year. Special permission from Dumbledore so he could play for Gryffindor. He's not even that good. It's just because he's famous. Famous for having a stupid scar on his forehead." Malfoy bent down to examine a shelf full of skulls. "Everyone thinks he's so smart, wonderful Potter with his scar and his broomstick." "You've told me this at least a dozen times already," said Mr. Malfoy with a quelling look at his son. "And I would remind you that it is not prudent to appear less than fond of Harry Potter, not when most of our kind regard him as the hero who made the Dark Lord disappear." "Ah, Mr. Borgin." A stooping man had appeared behind the counter, smoothing his greasy hair back from his face. "Mr. Malfoy, what a pleasure to see you again," said Mr. Borgin in a voice as oily as his hair. "Delighted, and young Master Malfoy too. Charmed. How may I be of assistance? I must show you. Just in today, and very reasonably priced." "I'm not buying today, Mr. Borgin, but selling," said Mr. Malfoy. "Selling?" The smile faded slightly from Mr. Borgin's face. "You have heard, of course, that the Ministry is conducting more raids," said Mr. Malfoy, taking a roll of parchment from his inside pocket and unraveling it for Mr. Borgin to read. "I have a few items at home that might embarrass me if the Ministry were to call." Mr. Borgin fixed a pin's nez to his nose and looked down the list. "The Ministry wouldn't presume to trouble you, sir, surely?" Mr. Malfoy's lip curled. "I have not been visited yet. The name Malfoy still commands a certain respect, yet the Ministry grows ever more meddlesome. There are rumors about a new Muggle Protection Act. No doubt that flea-bitten, Muggle-loving fool Arthur Weasley is behind it." Harry felt a hot surge of anger. "And as you see, certain of these poisons might make it appear
I understand, sir. Of course, said Mr. Boggin. Let me see. Can I have that? Interrupted Draco, pointing at the withered hand on its cushion. Ah, the hand of glory, said Mr. Boggin, abandoning Mr. Malfoy's list and scurrying over to Draco. Insert a candle, and it gives light only to the holder. Best friend of thieves and plunderers. Your son has fine taste, sir. I hope my son will amount to more than a thief or a plunderer, Boggin, said Mr. Malfoy coldly. And Mr. Boggin said quickly, No offense, sir, no offense meant. Though if his school marks don't pick up, said Mr. Malfoy more coldly still, that may indeed be all he is fit for. It's not my fault, retorted Draco. The teachers all have favorites. That Hermione Granger. I would have thought you'd be ashamed that a girl of no wizard family beats you in every exam, snapped Mr. Malfoy. Ha! Said Harry under his breath, pleased to see Draco looking both abashed and angry. It's the same all over, said Mr. Boggin in his oily voice. Wizard blood is counting for less everywhere. Not with me, said Mr. Malfoy, his long nostrils flaring. No, sir, nor with me, sir, said Mr. Boggin with a deep bow. In that case, perhaps we can return to my list, said Mr. Malfoy shortly. I am in something of a hurry, Boggin, and I have important business elsewhere today. They started to haggle. Harry watched nervously as Draco drew nearer and nearer to his hiding place, examining the objects for sale. He paused to examine a long coil of hangman's rope and to read, smirking, the card propped on a magnificent necklace of opals. Caution, do not touch. Cursed, has claimed the lives of 19 Muggle owners to date. Draco turned away and saw the cabinet in front of him. He walked forward, stretched out his hand for the handle. Done, said Mr. Malfoy at the counter. Come, Draco. Harry wiped his forehead on his sleeve as Draco turned away. Good day to you, Mr. Boggin. I'll expect you at the manor tomorrow to pick up the goods. The moment the door had closed, Mr. Boggin dropped his oily manner. Good day yourself, Mr. Malfoy. And if the stories are true, you haven't sold me half of what's hidden in your manor. Muttering darkly, Mr. Boggin disappeared into a back room. Harry waited for a minute in case he came back. Then quietly, as he could, slipped out of the cabinet, past the glass cases, and out of the shop door. We'll stop it over here. Let's play one match. So if you are starting now, then you can fairly assume that it'll end by 9:30. So sometime around then, we'll be having our next session. Anyway, it was fun. Ready, get the clips ready. Match found. Alright, this has been long awaited answer here, because we've been getting mad shit actually. Alright, I forget what map it was, but I don't know if it was after map 1 or map 2 or whatever it was, but we're all going to the bathroom, right? And the bathroom is only like 1 stall or 2 stalls in there, okay? And me and Vic opened the door. There's like 6 Sentinel players in there. Jerseys like lit up red in there. The Sen fam is in that shit, alright? And we look to each other and we're like, alright, let's go to the women's bathroom. Because like Riot allows that. Like the women's bathroom is right next to it, and after matches, like the players can go into it if the men's bathroom is full. And I think John like misunderstood. We said like women's for sure, and he took it as like nervous. He's like nervous for sure or something.
I don't know, like, whatever. It's not that big of a deal. But, it was kind of funny to, like, see it afterwards. But yeah. Like, guys, you think we're weird enough to, like, say that to someone after a map, guys? Come on. Like, what? Come on, guys. Trust me, if I'm talking shit, I'm gonna let you guys know I'm talking shit. Like, what? But if I didn't say something, I didn't say something. Like, I'll let you guys know if I was talking shit, on God. Guys, the bathroom is full after a game. We have like 3 minutes or something to go to the bathroom. Yeah, like I'd never even interacted with John QT. Like, I can't be talking shit to this guy. Like, what? But yeah, whatever. We just let it go. We just got shit for it. Whatever. That's how it is. Nice cover story. Denying the allegation. Like I said, if me and Vic are talking shit to someone, we would definitely, like, you know, been talking shit on stage my whole career. Try to let him know after, or nah, I haven't really messaged him. At the time, I didn't even know he took it like that. Like, we all saw it from the clip, and then we talked about it as a team, like, what the fuck's going on? And then, yeah, we, like, figured it out. Because, like I said, I feel like none of us are, like, weird enough to, like, say that to someone. Like, I don't know. Fight! I have your part back. of competition, mental game is part of it. Nah, not even that. It's just weird, bro. You, like, talk about someone when they're right in front of you. It's, like, a little weird. But yeah, it didn't even happen. It's all good. It's all good. We move on. You guys like to go these days? To be fair, if I'm carrying after yesterday, I think he'll be gone. No, low. Okay, first of all, those numbers are crazy. Yeah, I was gonna post my numbers. You know that, Sam? I was gonna post my numbers. Proud, and I saw his numbers. I got mad. Nah, he owes. He actually owes. I hate that our screens are just waiting rooms for him. Okay, let me explain something to you guys. You guys know Tarek made $30,000 on one stream. You guys understand that? Actually, I haven't even that's ad revenue only. He probably made over 50K. Now, he made around 40 to 50K if you count his subs too for the day. His stream numbers were insane. Why are you exposing him? That's not exposing. Like his general day stream. No. His normal streams aren't that much. Being a successful streamer, like to that level, is literally a actual cheat code. Like you can never sit there and ever complain about your nose. Never. No matter how stressful it is, you can never complain because everyone will say you're entitled. Never, ever can you publicly say streaming is stressful. You'll get eviscerated. Your ad revenue can't be that bad either. No, it's good. I'm happy with where I am. Trust me. Here's the thing. You just go into it. Tarek has literally never once complained about, like, at least to me, never said, like, oh yeah, dude, I'm just thinking. I'm excited for this game. Okay, yeah, here, I'll talk. Okay, here are Sentinel's win costs, okay? Now, when a team comes from the lower bracket, and you enter the grand final, a lot of the times you don't feel nervous. You actually feel like you're the underdog. You're not supposed to win anyway. You have no advantage. The other team has the advantage. So when you're the underdog, and you come from the lower bracket, and you have obviously the veto advantage and stuff, you don't feel nervous on stage at all. So I think Sen will have that. The win con here is you're hoping Genji coming from the upper bracket feels nerves right now. They have every advantage in the game. So this first map matters like more than anything. Beat them on this first map, Sen wins this game. They lose this first map, it's GG. That map 1 is so important because it puts the upper bracket team on edge. And when you're coming from the lower bracket, you feel nothing. You literally feel numb. I'm telling you, from when we played loud in the lower bracket, coming from the lower bracket in champs, I am 100% sure if we closed that game out, I guarantee we would have won champs. But we lost that map 1, and it was the most devastating map loss, and it gave them so much momentum. क्या हो रहा हम क्यों नहीं मार पा रहे हैं शॉट They have to make a play. They have to make it now. Backing away with a position. Yeah, they're on like a really fucked up buy. You have to go for desperation. Genji have made such an incredible comeback in this half. They're starting to believe it. They're starting to earn it. Only 3 rounds away from lifting that trophy. This one should be a gimme. Centrals to pull out. Just miraculous moments, but honestly, just divine like just be necessary. Jiggle. For gathering for Lakia here. Not that there's much chance of a punish.
is it broken, denying, and sort of grounded. He might be able to gain Meteor. He's up close and personal now with this rifle in his hands. Does he anticipate this kind of danger? It's returned, at least with the fire, but he's already gained 2 kills for his team. And now John QT wants to put a bit of on here still. Doesn't have a rifle to take that fight. Dungeon, finally the run and gun in action. Sassy, sticking his plan down. I'm gonna fucking puke. Very nicely done there by Sentinel. Remove. Lucky had just given it away a little too early by taking the shot. Missed it on John. It's opened up a chance for Sen. Post plants look good as well, honestly. They do. They've also planted it so you can get one and then ult away to heaven. Possibilities now for Sen. Dominating. 12 here. Paranoia's exchanged. Man, okay, the name moves about with the TP. Engage. Texture. Matters into his own hands. Just flips his way onto the site now and out through the back of it. Neurofect. Maybe some false information, but they are looking everywhere now. Smoke. Drop down. Texture. Sticking. Let's fucking go! What a wave! I'm gonna fucking throw up. I think I just forced it up. 10 kills remaining. These will not go quietly. It's primes. Both teams finding those avenues to be able to turn these into miracles. It's Lakia there who just was. Sir, he's very good at that. Yuck. Celsius? Hi. Hello? You're no longer merchant anymore. Oh, But stop as it. a Oh, but you stop are it. a Masters winner. How does it feel, especially knowing that you guys had the toughest and difficult road to get to this point? I've had enough. What's your I'm at? still a Vibe I've had merchant enough. and a What's your Masters at? winner. I'm just I will kidding. take that to my grave. No, this is a dream come true for me. I feel like I've been chasing this since I've started in esports. I've had 5 kills remaining. long career. I folded, bro. I told myself I would never stop until I got a trophy, and now that I have one, especially Okay, I with these shouldn't guys, I just want engage to in keep that. chasing. And you know, it feels really good. Like we did this as a team. For me as an Enemy individual, it feels really good because you know, I have a lot of hate around my name and like as a player and stuff like that. And I'm glad that I finally got to show that you know I do belong on a championship team. And Omen I- kill. Storyline, bro. 1 kill remaining. Thank you and congrats. Dude, the way you said that, I thought you were gonna like announce your retirement. I thought you were gonna be like, Can you imagine if I just said Yeah. I'm retiring? yeah, dude. You're saying I wasn't gonna stop until I won a trophy, but then we won a trophy. I was gonna be like, okay, that's it for me. No. And on that note, We need to continue. He'll never be Dude, done. you scared me. I will never be done. No, this guy, I'll never be I will done. never be done. Champions Zelda's retires at the end of next year. Mark my words. One master. I will never be done. Champions Zelda. Spike planted. You had your fun. My turn. Interesting. So now I have to kill you, or else. Let me see if I don't kill you. Let's see what happens here. So it's like a damage or an assist timer. And if I don't hit it, I die. Okay. Okay, so let me try for you. Turn off your auto respawn. Kill me. Oh no, it won't work because the round ends. We'd have to swap sides. Okay. Then I'm over here. I'm like, what the heck? Oh, you have that timer to hit it? Back like I never left. Oh, and then Oh I my could, God, and you then, can yeah, you can move. move. Yeah. My ult is ready. I'm back So for cool. That's so good. sick. Mess yourself. So cool. Sir, he's very good at. Brian. But to be fair, Okay, who said he's nerd? What the heck? Chalo, let's go. I mean, no, record DM and then let's go. अरे यार 89th मिनट पे जीत जाएगा जाके अफगानिस्तान इंडिया what you doing Death match. Warm up.
Weak shot. नहीं होगा. लॉन्ग रेंज पे नहीं काम कर. नहीं अभी तो कर रहा था ना लेकिन. We know what we're स्प्रे doing. डाउन ही करते हैं Trust लोग each टप other टप and we'll be मार के fine. निकलेगा. Fight. Find the weak point and break it. That's 3. ए छी छी. Fireboy's gone. Oh no no no. स्प्रे नहीं इतना नहीं करना चाहिए. थोड़ा हद हो गया. स्प्रे भी करे थोड़ा सा स्मार्टली करना होगा. ऐसा नहीं कि बस कर्रा मारते जा रहे हैं मारते जा रहे हैं. इधर उधर क्या कर रहे थे. Ended. That's 3. अरे यार. One less. Done with. वही. Take it out. Uy 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 uy.
Ui. Ui, ui. Oh, nice. One down. डरा दिया भाई, डरा दिया. Ten kills remaining. छी यार, टैप एम एकदम है. 5 boys gone. Out. 5 kills remaining. Kill remaining. Last one. 1 minute remaining. Don't finish. Could be stronger. Fuck it, we ball with this aim. We don't care. जब तक मैच नहीं मिला तब तक ही पढ़ लें क्या? चलो पढ़ लेते हैं यार, क्या ही करना है. Let's not break protocol.
round. They think I'm an old dog. Drax सरफराज है वो player 1 Jadi Darinda Jadi पितृदेव है so अरे दोनों इनिशिएटर ही ले लिए लो ओके बेस्ट होगा अभी अगर ये फिनिक्स रेना भाई स्मोक्स है एस्ट्रा कुछ और ले ले स्मोक्स है अपने पे तो तुमने इंस्टा लॉक किया वही आता है मेरे को तो कर ले भाई लॉक फिर इधर वेट क्या कर रहा है हो गया ना सेलेक्ट शर्मा मत भाई ये रोएगा बहुत रोएगा बेतहाशा रोएगा ये चेंबर ही है ना इनका बेस्ट भाई बी पे घुसा जाएगा No, you cannot eat the Radianite. कॉल्स दे के स्मोक करेगा या फिर अनोयंस में अकेला अकेला खेलता रहेगा बोलो जैसे तुम बोलो बस मेरे को ब्रिम नहीं आता भाई इसीलिए मैं वो लेने वाला था कोई ना यार मेरे को 14-15 लाइनअप्स आता है इधर तो तू माफ कर ही सकता है मेरे को बहुत आते हैं भाई बस फिर ठीक है ना बस फिर दोनों बराबर ही कहते या तो तू खेल या मैं तो अपने बढ़िया है ना डबल स्मोक जीतेंगे इजी फिर बस फिर चल पहले स्मोक्स मैं करूंगा फिर तू करना भाई मजा बहुत आता है सेंटर ब्रिम खेल के भाई है ही बेहतरीन मैप ब्रिम इधर मेरे इधर से भी लाइनअप है Launching smoke. अरे अरे ऐसा क्या घुस रहा है Enemy down. Last player standing. Spike down B. टैग था यार यहाँ पे We get eyes on that omen, then we bury that. गेको स्पाइक ले ले गेको आजा एकदम फटाफट मत घुस वेट करता ना तेरा फ्लैश के वापस आने का ठीक है मैं ऊपर फ्लैश मारूंगा सीधा ऊपर 9 डिग्रीज कहाँ से यहीं से यहाँ से नहीं पकड़ाएंगे ना सब साइड वाले Safety's off. दीवार से खड़े होके मारना होल्ड कर रुको मेरे पे स्मोक है अभी या फिर निकल जाओ यहाँ पे 3 लोग हैं एटलीस्ट गन लियो उसका मैं एक स्मोक गिरा रहा हूँ यहाँ पे तू अपना स्टार वापस खींच लेना उठा लिया मैंने उठा लिया मिड स्मोक चाहिए हाँ अब तू स्मोक्स दे मैं इधर बैठा हूँ यहाँ पे अभी दिया रेना भी मिड आ रहा है कैट पे चैम्बर लो है ठीक है चेंबर और रेना भी आ रहे हैं मिड से एक को लेऊंगा रेना लो है चैम्बर भी लो है रेना हील नहीं लिया भाई स्पॉन में था अरे तो दो मिड बोला किसी के लो सोवा में भी लाइनअप से लगता है नहीं है वो अरे सोवा ऐसा पोजीशन गया ना तू नहीं आता ऐसे कुछ दोनों आ गए साइड Revealing area. There they are.
भाई मिड रॉन्ग कॉल क्यों दिया भाई 2 मिनट में बोला। अरे चेम्बर और रेना दोनों उस समय ट्री पे थे। दोनों लो थे। चेंबर घूम के आ गया उस तरफ। हाँ चेम्बर घूम के आ गया होगा उस समय। एस्ट्रा लर्क मारेगा क्या तू? इधर भी कहीं भी लर्क मारना, तेरा स्टार्स तो कहीं से भी आ सकता है। तू डिफॉल्ट स्टार्स गिरा के रख दे सारे पोजीशंस पे पहले ही, और फिर उठाते रहना। स्प्लिट खेलते हैं। हाँ ठीक है, उधर साइफर जा रहा है ना। सॉर्टेड। साइड फुल चाहिए तो वहां पे थोड़ा पीछे रह केओ का नाइफ आ जाने दे। ये इधर है उसका कॉल दे दे। आजा चल मिड बॉटम स्मोक कर रहा हूँ मैं। Smoke's down. मिड घुसना है। मिड घुसना है गाइस, आजा। निकलो एस्ट्रा निकल अब यहाँ से। मता अभी गेको मता वो लोग पुश करेंगे तुम लोग को, तो मैं पकड़ता हूँ। अरे यार Spike down mid. On the money. 30 seconds left. कहीं तो दोनों पे घुसते हैं साइड। चेम्बर 80 है, ट्री पे था अभी वो। ये मिड पे ही था क्यों? एक काम करते हैं, अगली बार ए ऑन करके फास्ट बी पुश करेंगे। ए मिड पे था क्यों, कौन बोला? अरे बहुत पहले मिड। भाई तो बहुत पहले वाला मत देना। बहुत पहले सारे मिड में ही होते हैं मतलब। हाँ क्या बोल रहा है गेको, क्या करना चाहिए अपने? सुन ए पे साउंड देते हैं ठीक है, फिर धीरे-धीरे बी वॉक करेंगे या और फिर कर देंगे। नहीं सुनो ना मेरे को लगता है केओ का नाइफ आएगा ये पे, पीछे रहे, उसका नाइफ आ जाने दो। स्लोली वॉक करते हैं एमेन तक और रश कर देते हैं। हम लोग रश नहीं किए ढंग से एक भी राउंड। हां ठीक है, रश नहीं किया अभी तक। ठीक है पीछे रह नहीं बी पे कर रहा है। ओह उसको मार के आ जाओ। कर सकता हूं, साइड आउट कर सकता हूं मैं। नहीं रखना, पोस्ट प्लांट के लिए रखना। स्टार्ट दे रहा हूं मैं। चल मेरा स्मोक गिरने दे। Holy smoke. And beacon down. मैं लाइनअप पे जा रहा हूँ। मैं आउट पे खेलूंगा आराम से। एस्ट्रा तू आजा, साइफर तू मिड से आजा। हो गया, प्लांट कर दिया हम लोग। स्टार नहीं मिड पे, एक ही है, हेवन है, राइट साइड वाला स्टार है। उस स्टार को उठा के बॉम्ब पे डाल सकता है क्या? नहीं हेवन ही दे दे। दोनों हेवन। One enemy remaining. Nice. Their confidence begins to crack. ट्रेन अपने स्पॉन से आ रहा था, पहले वो चाटा खाया। एस्ट्रा ड्रॉप दे दे उसको। नाइस। रेना स्पॉन से आ रहा था पूरा। अच्छा अब बोल। मैं एक काम करते हैं, वीरस करते हैं, मैं अल्ट करता हूं। चलो। मेरा भी अल्ट। एस्ट्रा मिड से आ तू मिड टॉप से ही खेलना। अल्ट सेफ रख अभी सेफ। मेरे को लगता है ना मिड से पुश करेंगे, और थोड़ा बिवेयर रहना। हो सकता है रेना फिर से ना स्पॉन से आने की कोशिश करे, तो एक बार वो ए से भी कोशिश कर रहा था। Got the spike. स्मोक कर रहा हूँ मैं, आ जाओ गाइस, भी आ जाओ। Smoke's down. Stim beacon here. Revealing enemy. अल्ट उठा अपना, जल्दी गेको। क्या बता? अल्ट उठा अपना। सिटी स्मोक्स दूं? हाँ स्मोक्स देना, सिटी और वो दोनों मार्केट दिए। हाँ मैं लाइनअप पे आ गया हूँ।
Reloading. लॉल One enemy remaining. अबे यार पुल Team A. नाइस अपने ही टीम के पुल में भी मार दिया Keep them in our sights. भाई क्या को अच्छा अल्ट था ऑल्दो मेरे को लगा जेट पकड़ा गया तेरे अल्ट में नहीं नहीं अरे तू घूम के गया ना उतना और वो एकदम तेरे अल्ट के सामने मेरे को मिनी मैप पे दिखा जेट मैंने बोला नाइस ए साइफर इधर मत लगा फ्लैश भी खाया वो अच्छा सुन मैं अल्ट और कलेक्ट करता हूँ ठीक है थोड़ा ज्यादा आगे नहीं लग गया ट्रिप पीछे वही मैं बोल रहा हूँ अब तो रहने दो अब तो साइफर भी दो और कलेक्ट करता हूँ ए पे नहीं सोवा को लेने देना उसका अल्ट जल्दी आएगा अभी तुम्हारा अल्ट भी है मैं तो प्लांट कर दूंगा नहीं मैं ले लेता हूँ गेको तू प्लांट कर दे एस्ट्रा तू इनके साथ जा मैं लर्क पे जा रहा हूँ मिड के अच्छा सारे आ गए हैं क्या स्टार्स गिरा दे अपना दोनों स्मोक गिरा दे अपना एस्ट्रा साइड पे मत जाइए चल गेको उधर से मत जा साइफर घुस ना भी हाँ स्पॉन्सर पी रश करेंगे सोवा आजा इसने दोनों यूज कर दिया स्मोक टर्न किया जेट को जेट स्टन है फ्लैश करता हूं मैं एक साथ घुसेंगे स्मोक रेडी Launching smoke. Stim beacon down. वेट करो What? दे रहा सीटी से मारा I can't use that. Our spike carrier is killed. मारा बड़े Spike down B. ये किधर है 30 seconds left. One enemy remaining. भाई साइफर सेडिस्ट एकदम सेव कर लो सेव Shot down. जाना वो स्पॉट हो गया है सीटी पे है वो Nice. I set the punishments on them. Vibe check. We feeling good? Hope so. शरीफ दे Gun. और लेता हूँ मैं फिर से हाँ ठीक है तू और प्ले ले और लड़का को भेज देगा प्लांट के लिए तो फिर तेरा अल्ट आ जाएगा You want to play? Let's play. Up and away. एस्ट्रा स्मोक्स पहले मैं कर रहा हूँ कर दिया क्या तू नहीं मैंने नहीं किया स्टार लगाया दो अपर Fully smoked. Stim beacon here. कर सकता हूँ ना तुम भाई एक स्मोक येला करना येला स्मोक कर दे हेवन का राइट कोने पे Right here. केओ 120 है हेवन पे केओ 120 है फ्रे मार सकता है गिक को मेन से आ रहा है ओमन आ रहा है ऊपर है केओ 120 है Last player standing. केओ स्टिक करेगा 120 है वो लाना कुछ और इस पर कर दे टाइम नहीं है Open up the sky. जा अभी जा Molly. क्या लाइनअप खराब हो गया One enemy remaining. नाइस वन अरे मैं उसमें लाइन अप ही नहीं कर पा रहा था मेरा बार गेम अटक जा रहा था अभी Brimstone, you are a true leader. भाई लाइन अप तो मेरा ट्री से था उधर आके मेरे को करना किसका अल्ट है अभी मेरा चलो अरे वो मेन पे उस समय तक गया नहीं था ना हाँ वहीं से करना था मेरे को पता नहीं वहां गया मेरा गेम अटकने लग गया नाइफ आ सकता है थोड़ा रुको केओ का नाइफ आ सकता है फिर यहाँ से बी मेन से हट करूंगा मैं
स्मोक कर दिया ठीक है। पहले स्मोक में डाल रहा हूँ, रुक एस्ट्रो रुक में रुक डालना। रुक रुक एक सेकंड पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। ए फेक स्मोक डाल रहा हूँ। अबे यार कोई ना कुछ अरे फक, साइफर को दे देता तो वो अल्ट कर लेता। Scanning ahead. हाँ ठीक है अल्ट एक अल्ट यूज कर। Reloading. साइफर Out city, out city. एक मेन पे Enemy down. एक आउट सिटी है साइड में होगा। हाँ स्पेस बना के खेलो था। One enemy remaining. I can't use that. साइड पे लाइन अप है ना। Molly. लाइन अप गिरा। हाँ गिरा बढ़िया था। एक इधर से मेरा ये इसका लाइन अप इधर से। मैं उधर वाला आसान है, लॉबी वाला इजी है। फिर से करता हूँ, आ जाओ भी आ जाओ, कैसे करता हूँ। आई मीन हट है। 5 है मेरे पास लॉबी से 2 है और एक है मेरा पिज्जा से। सिटी वाला बहुत मुश्किल है याद रखना, इसीलिए मैं फक इट कर देता हूँ उसको। सोवा का वो आ सकता है। वो जो तूने अभी इधर वाला प्लान दिया ना, इसका लाइनअप एक इधर से और एक इधर से मेरे पास। चलो बेटा नीचे कूद गया वो। दिख गया साइड पे थे। साइड पे पुल कर रहा हूँ मैं। Like butter, baby. ए साइड पे है। Spike down B. भाई एक यही है, क्लोज। I have this fight. एक सिटी है शायद। हाँ एक सिटी है। 40 तक सिटी एक बैकस्टैब, एक सिटी। अल्ट मार सकते हैं। Blocking vision. Need that back. I can't use that. Obscuring vision. Powerless. Last player standing. One enemy अरे remaining. बाप रे बाप। क्या हो रहा था? साइफर पूरा उधर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बना रहा था। पूरा घर भी तो आगा, केओ भी तो पूरा ऐसे है। पहले थोड़ा स्पेस बना पड़ेगा अल्ट मारने से। Damn, you love being. Can someone buy me, please? ये भी घुसते हैं फास्ट। अंदर साइड मैं नहीं जा रहा इस राउंड, साइड पे मैं पीछे खेलूंगा। क्या करो ना इधर। साइफर इस बार मत जा, इस बार तू भी साथ में घुस जा। इजी रहेगा बी पे फ्लैश देना, मेन मत दिया करो। एस्ट्रा स्मोक में डाल रहा हूँ पहले। दूंगा वॉक करो ये तो वॉक नहीं है। Stim beacon here. अरे फक यार, बैक स्टेप लगाया नहीं क्या? लगा हुआ है। आजा Out of charges. बी आते बी चलते आजा पीछे आजा जल्दी आ जा भाई। कोई ना, ये मेरे को रोटेट नहीं करे तो आ रहा हूँ मैं फिर से। 2 घंटे से फाइट चल रही है उधर। बड़ा नाइस आर्ट। बी आजा, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। Launching smoke. डिफेंस स्मोक नहीं अभी आएगा। Spike sticking. Thanks, little गोली man. भी खा ली। Reloading. मुझे लगा बैक से आएगा। Camera taken out. दोनों सिटी। One enemy remaining.
was never in doubt. Yeah, my people, oh, yeah. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. 29 HP बचा था, रगड़ दिया ऐसे में। किसका अल्ट है? एस्ट्रॉक आ जाएगा, मेरे पास है, सोवा के पास है। भाई हमारे पास पोस्ट प्लांट तो इजी है इस राउंड। प्लांट करके अगर निकल गए ना फिर तो खत्म है इनके लिए राउंड। You know what to do. रेना लेट तक खेलता है, ठीक है? हाँ ठीक है, रिफ्रेश कर। Get out of my way. Nice, good trade. Spike down B. Scanning ahead. कौन सा चैम्बर में? Cage trigger. साइबर देयर स्पाइक है वो। वो फंस गया अभी। मार्केट पे भी आदमी, सिटी पे भी Here. आदमी। मार्केट पे रेना। अरे मार से। नाइस। साइफर बाबा माइक यूज करो, थोड़ा बताओ लोगों को क्या फंसे हुए हैं। सोवा तू यहीं सिटी से ही खेल, ठीक है? अगर कोई नहीं दिखता ना सिटी पे तो यहीं खेल One ले। enemy remaining. यहीं कहीं नाच रहा है वो, मारो। Found them. Concussing it. Reloading. Last round before the switch. Buy all you need. अल्ट करो फिर से, आ गया मेरा अल्ट। पोस्ट प्लांट अल्ट भी है, एंट्री के लिए अल्ट भी है। मैं अल्ट करता हूँ, मतलब यही से करूँगा। भाई ले लो, आई गेस मैं अल्ट कर रहा हूँ। अगर मौका हो तो करें। एस्ट्रा फर्स्ट स्मोक्स तू ही दे इस राउंड। Revealing area. Get him, wingman. साइड पे हो गए। Launching smoke. ब्रो कवर करना। नाइस वन। One enemy remaining. नो Not so tough. Open up the sky. Switching sides. मैं ये खेल रहा हूँ, तू भी खेल एस्ट्रा। मैं कहीं पे भी खेल सकता हूँ। मैं बस कॉल दे रहा हूँ तेरे को ताकि हम लोग अलग-अलग। ए रश है तो मैं मॉली कर दूंगा। माश। नॉट येट, मैं शॉट ही लेके बैठ रहा हूँ इस राउंड। मेरे पे ना कर दियो मॉली। हाँ ठीक है। साइबर ये सब प्रो तार लगा रहा है तू, भारी प्लेयर लग रहा है। देख रहा है पत्थर से चिपका रहा अपना तार को। ये क्या तार है? Smoke's down. मैं पकड़ा गया। लॉल। अरे यार एक वाइन्स है और एक लॉबी में है, दोनों एक के बाहर है। एक वाइन्स था। Right there. One enemy remaining. के लिए क्या लड़ने वो नहीं। अरे सोवा तेरे पे गुस्सा कर रहा है क्या ये जेट? अबे नहीं मैं पूरे उसके पूरे रैंट में रिकॉन पढ़ पाया मैं, वो भी गलत एन रिकॉन लिख। भाई इसको बोल थोड़ा ठीक से लिख लेगा। मार चले किसी पे? नहीं ब्रो।
हेलो सर, मैं तो चैप्टर सुनने आई थी। नो ड्यूलिस्ट टीम इजी। अरे ठीक है ना, ये मैच खत्म होने के बाद अभी हम लोग चैप्टर 4 में हैं। पीछे गन मिल गई, मिड पे गन मिल गई उसे। एक के पास वो होगा स्पेक्टर के पास। अस्ट्रा में मिल जाएगा। जेट ने बाय किया था वैसे। मिड स्मोक कर अपना, ओला स्टार को स्मोक कर। ए आ रहे हैं। Bro. Down and out. Launching smoke. Reload. One enemy remaining. Spike ये down. बीमेन पे खला बहुत तेरे ट्रैप के साइड से पीक कर रहे। भाई कितना खराब बाकी चलाया मैं उधर की पे, बाप रे बाप। भाई देखा है। और अभी चेंबर आया तो उसको कैसा सट से एकदम हेडशॉट मारा फ्लिक जैसे, ओहो मैं ही तो हूँ प्रो प्लेयर। वहां पे तो ऐसा हगा ना, बाप रे बाप, शर्मनाक। चुप रहे यार सोवा, सब तेरे वजह से ही हुआ है। हाँ सही बोल रहा है, वो असली गेम प्ले था मेरा। यार चैन से मेरे को शॉटगन किल्स ही नहीं मिल रहा। नाइस शॉट रे। ओ भाई क्या मारा ये। अरे 112 है चेंबर ए के बाहर। 40 एचपी चेंबर। ठीक है। नॉट येट इजी। साइफर के पास ए है। Last player standing. Not yet. साइफर कर सकते हैं। इजी है। भी हो रहा है। पीछे से आएगा लेकिन। वो डब्बे पे चढ़ के बैठा है लेफ्ट साइड तेरे। हाँ। चल चुप रहो। देख लिया, बोनस से मारो। चेंबर भी लो है। अरे एंटी। अरे हम लोग इतना क्यों बोल रहे, इसको खेलने देना चाहिए था खुद से ही। अरे बोनस है, कोई दिक्कत नहीं, मरो जल्दी। अरे साइफर उधर क्लच करने को रेडी था, तू जानता नहीं है भाई साइफर को। मैं भी नहीं जानता हूँ बट ऐसे बोल। यार जल्दी है मैच खत्म हो तो हम अगला चैप्टर को पढ़ें। See you on the other side. ए स्ट्राइक गिरा। नाइस वन। रीलोडिंग। नहीं आ रहा। मिड जेट मिड पुश किया है। सुबह मिड पे स्पेक्टर है। Sit down. Thrash is ready. Dizzy's up top. Dizzy has target. अबे Gotcha. इसने सीटी से रेना आएगा। वो Last player standing. अरे यार ये आए ओडिन का ड्रॉबैक। वही देखा मैं। मिड कंट्रोल ले लो, मिड पे थोड़ा ध्यान दे लो। कैमरा वगैरह कुछ लगा के रखो मिड पे। हाँ वो ना मिड से घुस जा रहे हैं क्योंकि सारे बी खेल रहे हैं या ए खेल रहे हैं। इको करो, सारे इको कर लो ये रहो। मिड उनके पास 2 ओडिन होगा, हाँ केयरफुल। आई डोंट थिंक वो लोग उठाएंगे। उठाए थे क्या वो लोग? मेरा वाला उठाया अगले था। राउंड मेरा वाला उठाया था। फुल शील्ड के साथ में ऑफ ले लेना, इको कर ले। बीबी
Launching smoke. वो लोग लेन आए तो मेरे को कॉल देना 55 jet. Smoke's down. तो फ्लैश लेन घुसे शायद Spike down B. One enemy. Lol. गुड इको दो जने वल्नरेबल हुए मस्त अरे स्पाइक ए रहा हाँ वो ए से आ रहा है, वो ए से आ 30 रहा seconds है। left. सिटी देखो, सिटी देखो। सोवा के पास मिड वाला पोजीशन है, एक कोई सिटी देख लो बस। कॉल करूंगा वन बाय वन क्यों जा रहे हो We're going again. And they stopped her. इको मरेगा 5 seconds left. साइफर मरेगा भाई टाइम नहीं है, वैसे भी जीत जाएगा कोई ना। पिक कर ले करोगे तो कह रहा हूँ एडीएस लेके पिक कर। साइफर यस साइफर, नाइस। बोट हाउस पे कौन था? कैसा लगा? अबे मैंने तो वल्नरेबल करके मारा है, अर्ट तो कोई नहीं हुआ। अबे हिट हुआ, मैं वल्नरेबल करके मारा लेन पे भाई यहाँ पे। अबे मानेगा ही नहीं भाई दो लोग डिटेन हुए थे, साइफर मारा। अब वो बात अलग है, मेरे को दिखे नहीं, मैं उनको लेने वाला था। दोनों वल्नरेबल थे, एक केओ था, अच्छा एक तीन थे शायद। मैं दो किया। एक यहाँ बोट हाउस के अंदर तो वो आया हूँ मैं। Get out of my way. Smoke's down. The fun begins. नाइस वन यू, नाइस वन। एस कौन देखा? कोई नहीं देखा। कौन देखा? अरे स्मोक से अंदर से मारा ब्रो, आई ब्लाइंड। अरे सब देखा मैंने। One enemy remaining. Spike down A. ये होगा टॉप। Flawless. Match point. You've earned this win. Let's make it official. भाई 3 गन यूज किया मैंने 4 किल्स के लिए पिछले राउंड। असली यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो मैं कर रहा हूँ। ओडिन का स्किन है क्या किसी के पास? Need equipment. वो बहुत दूर है। Thanks. मेरी तरफ से Watch and learn. अरे मेरे पास गन है ऑलरेडी। You want to play? Let's play. You are powerless. लोअर मिड स्मोक कर पाएगा एस्ट्रा तू? टाइल्स नहीं, मैं ही डिटेन्ड। Launching smoke. आई थिंक ग्रीन को पुश कर रहा है। ओ भाई मार। मैं लेन इस बी साइड घुस गए। साइफर अंदर देख, अंदर। नाइस। Spike down B. घूम के आएंगे पीछे से घूम के आएंगे। Down you go. अल्ट। दोनों है क्या? दोनों है क्या? हाँ वही है। हाँ Stim beacon down. तो वो Last player standing. Spike planted. नाइस। एक स्टेयर्स पे था। इजी क्लास ब्रो, इजी क्लास। स्ट्रीम पोकेमॉन सायर। अरे अल्फा वो रिवील मार के अल्फा वाला था। पोकेमॉन एक दिन मेरे को लगता है खेलना होगा और मेरे को कैमरा को पोजीशन करना होगा थोड़ा फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोजीशन में।
तो फिर 3 2 1 लेट इट रिप जब करेंगे हम लोग यहाँ पे तो वो क्या अभी पोकेमॉन गो में खेलना पड़ेगा डिजिटल पोकेमॉन को स्ट्रीम करने के लिए। कर तू ऑफ कर, मैं इधर जा रहा हूँ ट्री पे। अगर मर गया तो मेरी गलती नहीं। अरे यार ड्रोन करो भाई मैं निकल गया। अरे ओडिन कर रहा है एक लिंक पे। So that was a really bad move. Mid 40 tag. Smoke हट रहा है, गेको स्मोक हट रहा है। तू मेन देख, तेरे को साइफर कवर दे देगा मिड से गेको। भाई कैसे? अबे यार ब्रो ओमन को लगा कैसे नहीं? पता नहीं यार क्या किया ये? देखें यहाँ स्ट्रीम पे। Last player standing. भाई क्या होता है? Spike planted. I'm pulling them in. Level heads until we're home, yes? अबे तू मारते समय हिल गया, तेरा गोली ऊपर चला गया ओमन के सर के। अच्छा मे बी। I don't have enough credit. सोवा लेकिन मैं ये खेल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको कार्ड? ओ सोवा कर रहा है अब तो, क्या ही लोड है। Yes. हाँ उसने ड्रॉप Better offer. ओ भाई ये पीछे था। Goner. Easy bro, easy. ये सोवा लिंक है। मतलब लिंक क्या बोलते हैं इसे? टाइल्स। One enemy remaining. जी। Spike down B. No, nice. Defenders win. Fun match. Very fun match. बहुत मजा आया, बहुत ही फन हो गया। Excuse me, my bad, sorry. Anyway, अब हम लोग पढ़ेंगे rest of the 4th chapter. Anyway, आइए। ओके हाँ, तो लास्ट क्या हुआ था? मैल्फॉयज निकल जाते हैं फ्लरिश एंड ब्लॉड से, मिस्टर बॉर्गिन से बात करके। हैरी निकलता है अपने छुपे हुए कबर्ड में जिसमें छुपा हुआ था, वो उससे बाहर निकलता है। एंड नेक्स्ट, clutching his broken glasses to his face, he stared around. He had emerged into a dingy alleyway that seemed to be made up entirely of shops devoted to the dark arts. The one he had just left, Borgin and Burke's, looked like the largest, but opposite was a nasty window display of shrunken heads, and 2 doors down, a large cage was alive with gigantic black spiders. 2 shabby-looking wizards were watching him from the shadow of a doorway, muttering to each other. Feeling jumpy, Harry set off, trying to hold his glasses on straight and hoping against hope he'd be able to find a way out of there.
An old wooden street sign hanging over a shop selling poisonous candles told him he was in Nocturne Alley. This didn't help, as Harry had never heard of such a place. He supposed he hadn't spoken clearly enough through his mouth full of ashes back in the Weasley's fire. Trying to stay calm, he wondered what to do. "Not lost, are you, my dear?" said a voice in his ear, making him jump. An aged witch stood in front of him, holding a tray of what looked horribly like human fingernails. She leered at him, showing mossy teeth. Harry backed away. "I'm fine, thanks," he said. "I'm just—" "Harry, what do you think you're doing down there?" Harry's heart leapt. So did the witch. So did the witch. A load of fingernails cascaded down over her feet, and she cursed as the massive form of Hagrid, the Hogwarts gamekeeper, came striding towards them, beetle black eyes flashing over his great bristling beard. "Hagrid!" Harry croaked in relief. "I was lost! Flu powder!" Hagrid seized Harry by the scruff of the neck and pulled him away from the witch, knocking the tray right out of her hands. Her shrieks followed them all the way along the twisting alleyway out into bright sunlight. Harry saw a familiar snow-white marble building in the distance, Gringotts Bank. Hagrid had steered him right into Diagon Alley. "You're a mess," said Hagrid gruffly, brushing soot off Harry so forcefully he nearly knocked him into a barrel of dragon dung outside an apothecary's. "Skulking around Nocturne Alley? I dunno. Dodgy place, Harry. Don't want no one to see you down there." "I realize that," said Harry, ducking as Hagrid made to brush him off again. "I told you, I was lost." What were you doing down there anyway?" "I was looking for a flesh-eating slug repellent," growled Hagrid. "They're ruining the school cabbages. You're not on your own?" "I'm staying with the Weasleys, but we got separated," Harry explained. "I've got to go and find them." They set off together down the street. "How come you never wrote back to me?" said Hagrid as Harry jogged alongside him. He had to take 3 steps to every stride of Hagrid's enormous boots. Harry explained all about Dobby and the Dursleys. "Ruddy muggles," growled Hagrid. "If I'd have known—" "Harry! Harry, over here!" Harry looked up and saw Hermione Granger standing at the top of the white flight of steps to Gringotts. She ran down to meet them, her bushy brown hair flying behind her. "What happened to your glasses?" "Hello, Hagrid. Oh, it's wonderful to see you two again. Are you coming into Gringotts, Harry?" "As soon as I've found the Weasleys," said Harry. You won't have long to wait," grinned Hagrid. Harry and Hermione looked around. Sprinting up the crowded street were Ron, Fred, George, Percy, and Mr. Weasley. "Harry!" Mr. Weasley panted. "We hoped you had only gone one grade too far." He mopped his glistening bald patch. "Molly's frantic. She's coming now." "Where did you come out?" Ron asked. "Nocturne Alley," said Hagrid grimly. "Brilliant!" said Fred and George together. "We have never been allowed in," said Ron enviously. "I should really well think not," growled Hagrid. Mrs. Weasley now came galloping into view, her handbag swinging wildly in one hand, Ginny just clinging on to the other. "Oh, Harry! Oh, my dear! You could have been anywhere!" Gasping for breath, she pulled a large clothes brush out of her bag and began sweeping off the soot Hagrid hadn't managed to beat away. Mr. Weasley took Harry's glasses, gave them a tap of his wand, and returned them, good as new. "Well, gotta be off," said Hagrid, who was having his hand wrung by Mrs. Weasley. "Nocturne Alley, if you hadn't found him, Hagrid. See you at Hogwarts." And he strode away, head and shoulders taller than anyone else in the packed street. "Guess who I saw in Borgin and Burke's?" Harry asked Ron and Hermione as they climbed the Gringotts steps. "Malfoy and his father." "Did Lucius Malfoy buy anything?" said Mr. Weasley sharply behind them. "No, he was selling." "So, he's worried," said Mr. Weasley,
with grim satisfaction. Oh, I'd love to get Lucius Malfoy for something. You be careful, Arthur, said Mrs. Weasley sharply as they were ushered into the bank by a bowing goblin at the door. That family's trouble don't go biting off more than you can chew. So you don't think I'm a match for Lucius Malfoy? Said Mr. Weasley indignantly. But he was distracted almost at once by the sight of Hermione's parents, who were standing nervously at the counter that ran all along the great marble hall, waiting for Hermione to introduce them. But you're muggles, said Mr. Weasley delightedly. We must have a drink. What have you got here? Oh, you're changing muggle money? Molly, look! He pointed excitedly at the 10-pound notes in Mr. Granger's hand. Meet you back here, Ron said to Hermione as the Weasleys and Harry were led off to the underground vaults by another Gringotts goblin. The vaults were reached by means of small goblin-driven carts that sped along miniature train tracks through the bank's underground tunnels. Harry enjoyed the breakneck journey down to the Weasleys' vault, but felt dreadful, far worse than he had in Nocturne Alley when it was opened. There was a very small pile of silver sickles inside and just one gold galleon. Mrs. Weasley felt right into the corners before sweeping the whole lot into her bag. Harry felt even worse when they reached his vault. He tried to block the contents from view as he hastily shoved a handful of coins into a leather bag. Back outside on the marble steps, they all separated. Percy muttered vaguely about needing a new quill. Fred and George had spotted their friend from Hogwarts, Lee Jordan. Mrs. Weasley and Ginny were going to a second-hand robe shop. Mr. Weasley was insisting on taking the Grangers off to the Leaky Cauldron for a drink. We'll all meet at Flourish and Blots in an hour to buy your school books, said Mrs. Weasley, setting off with Ginny. And not one step down Nocturne Alley, she shouted at the twins' retreating backs. Harry, Ron, and Hermione strolled off along the winding cobbled street, the bag of gold, silver, and bronze jangling cheerfully in Harry's pocket was clamoring to be spent, so he bought 3 large strawberry and peanut butter ice creams, which they slurped happily as they wandered up the alley, examining the fascinating shop windows. Ron gazed longingly at a full set of Chudley Cannon robes in the windows of Quality Quidditch Supplies, until Hermione dragged them off to buy ink and parchment next door. In Gamble and Jape's Wizarding Joke Shop, they met Fred, George, and Lee Jordan, who were stocking upon Dr. Filibuster's fabulous wet start, no heat fireworks, and in a tiny junk shop full of broken wands, wonky brass scales, and old cloaks covered in potion stains, they found Percy, deeply immersed in a small and deeply boring book called Prefects Who Gained Power, a study of Hogwarts prefects and their later careers. Ron read aloud off the back cover. That sounds fascinating. Go away, Percy snapped. Of course, he's very ambitious, Percy. He's got it all planned out. He wants to be Minister of Magic, Ron told Harry and Hermione in an undertone as they left Percy to it. An hour later, they headed for Flourish and Blots. They were by no means the only ones making their way to the bookshop. As they approached it, they saw to their surprise a large crowd jostling outside the doors trying to get in. The reason for this was proclaimed by large banner stretched across the upper windows. Gilderoy Lockhart will be signing copies of his autobiography, Magical Me, today, 12:30 to 4:30 p.m. This is where we stop. This chapter is still like 10 pages more.
Match found. A sensational victory in Masters Madrid. Sentinels are the heavy going to potentially dominate the rest of this Valorant season, but John QT says they can potentially play even better. Despite being the highest rated player on Sentinels by some metrics this tournament, John QT, he reckons he as an individual can play even better, and I imagine the rest of the team does too. Can this end roster get even scarier? Very much intrigued to your thoughts in the comments below. Hit the like button if you enjoy. For some time during 2021, it was all about Gambit and teams like that. Champs 2021 was a great example. Ascend, of course, getting the victory there. But we got Reykjavik, Champs 2022 with Louds getting on top, and of course, Optic at the time as it was. Then the lock-in comes around. Again, Fnatic win Tokyo. They win the lock-in, but since then it's been Champs has gone to Evil Geniuses, and Madrid has gone to Sentinels, of course. But can they get even better, Sentinels? That is the question. They've had a phenomenal run over the last few months. The level of play they showed at the Africa TV tournament was a good enough level to win international events. The question was, would they be able to improve on that level with other teams also going to be leveling up? Could they maintain that performance? I was always pretty confident that they could. I think they've got from me. But like, I had to play Red. Stop blazing yourself. Alright, sorry. I'm just jealous that I'm there on stage and I'm not. That's the on. This goes here. Hyperion's killed. Spike down B. Camera taken out. Reloading. Last player standing. I have retrieved the spike. Cypher, just tell me where they are. I'll do the rest. यार कोशिश करते तुम लोग सब जिंदा रहने का, सबको स्पेक्टेट नहीं करना पड़ता। से तीसरे सेकंड में सब चल बसोगे और फिर आखिरी प्लेयर को कीप काम के लिए बोलोगे तुम लोग, तो कैसे चलेगा? Yes, this should do. This is gonna be fun. Need to rush me. Reyna mid. Spike down. Last player standing.
Ooh, okay. You want me serious? You got it. So, my guess is This is a nice spot. That goes there. Okay. Let's go. 5 B man. 5 B man. Get out of here. Enemy spotted B. Brimstone backside. Spike down B. Why do I have this spike? Last player standing. One down. Listen, big. ये चलो Yes, ये चलो this goes here. Reset the tempo, not them. Grenade! Multiple enemies A. One dead. I have to get the gun tray. What do you mean get the fight? Alright. KJ side, KJ on side. Spike down A. Cage triggered. Get spike and rotate. I have retrieved the spike. One enemy remaining. A corpse. Just run me. Both of you run me. Okay. Heavy नहीं खेल तू. Cage triggered. Planted the spike. सिटी देख मैं तेरे लिए हेवन देख रहा हूँ. थोड़ा आगे जाके देख भाई, हेवन से देख लेगा तेरे को नहीं तो. I'll try to be even more forward next time. It'll be hard, but I'll try. The party's just begun. That goes there. वाइपर आजा स्पाइक लेके ए पे. एंटर ऑन फिनिक्स's अल्ट. फिनिक्स साइड से मत करना, वो केजे अपना मॉली खोल देगा और तू ऐसे ही मर जाएगा बस. This is a nice spot. होल्ड इजी प्ले. वेंट्स पे 2 लोग आ गए तुम्हारे पास. Enemy spotted A. Enemy spotted A. एक Prepare for hellfire. Last player standing. Put down. Reyna 120. स्पाइक को स्टैम्प करो ना. रेना को स्टैम्प करके क्या करना? Let's do this. This
goes here. सेज कब? अच्छा हाँ ठीक है, याद आ गया। तुम लोग बी पे स्लो खेलो, हम लोग ए फेक करते हैं। Don't get revealed or anything. Yeah, don't take the or balls. Just wait. अच्छा तू, हाँ तू ले ले भाई। My ult's ready. Watch this. अरे यार कवर दो, 120 है हमारे ना। -50. Poison orb emitted. Satchel out. You will not kill my allies. रेस बस पीछे से खेल तू, तेरे पास अल्ट है। Just hold. You're 5 HP. Don't do anything. It's planted on B. Help. We have Last player standing. No, hold it. Grenade. Oh, nice bro. Wow. अरे well played भाई। Clutch. Good. Will they try the same old tricks? गाइस फिर से ए फेक करो ना, या फिर छोड़ो इधर बी रश करते हैं। वाइपर को और दिला। B or somebody just lurk A out for me, then we can just end it and I can ult. Okay, I'll go. अरे डुएलिस्ट्स, ओ डुएलिस्ट्स, फट से चले गए तुम लोग लर्क करने। इधर आ। हाय Viper can just smoke this. मैं क्या हूँ इस टीम में? मैं हूँ भाई लर्क करने के लिए। Can you smoke that Viper? Okay, Leon. Cypher will hold the AR for me. I can take the AR and then we can go in there. Where is everyone hiding? ओमन हेवन। वॉल करके तू अपना प्लांट करना। The hunt begins. Even I'm stuck. Heaven. Someone's 3 out of 5. Last player standing. अरे यार guys, what is You're up. Stay safe. We're going back in. लिटरली कोई नहीं था साइड पे, फिर भी कैसे नहीं हम लोग प्लांट कर पाए? You had Viper, you had Phoenix, वॉल कर सकते थे, ऑर्ब कर सकते थे भाई। गेम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है भाई। जेट का स्मोक्स था भाई, इतना सारा कवर था और फिर भी सब मर गए बस। This was a proper throw. Dude, the game froze, bro, for everyone. Shut the fuck up and listen. The game froze, रे। अरे कितना रोएगा भाई फिनिक्स? पेशेंस लाओ जीवन में थोड़ा, वरना मैं तो तेरे को 10 राउंड में 50 बार उड़ा दूंगा ऐसे में। Put down. Heaven. Cage trigger. Spike down A. Careful now. I'm just taking on. I'm just taking. Last player standing.
यही था मेरे को पहला राउंड में कीप काम होने के लिए बोल रहा था। क्या रे नागिन, पूरा पीठ दिखाता हुआ सेज पे होगा तू भी। व्हाट्स अप? ये मैच तो गॉन है, मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, I'll just chill, do my usual stuff. Yeah, bro. This goes here. One not five. Sage on not five. Push him. 1B. Push him, reject. You're playing too passive, dude. Hold. I'm trying to take a. 1 HP, dude. He's 105. You have to peek that. No, then what's the point? Guys, okay. Mid से आ रहा है, heaven आएगा, देख के. Please just hold. Let me come. Sage 1 HP. One enemy remaining. अरे nice रे. I'll outshine all their radiant. I need a drop. Cheers. Guys, A आ जाओ. Cut sound. Do not make any sound. Do not peek. Somebody will come to take the orb. We'll all peek and kill that person. Phoenix, बस वहीं hold कर. कोई orb लेने आएगा. Just hold. No util, no sound, no air knife. Hold. Somebody will come to take the orb. We'll peek the second time when they tap. Spike carrier is killed. Spike down A. My ultimate is ready. Nice one. Take spike. Someone take spike. My ultimate's ready. I have retrieved the spike. Cage triggered. Reloading. I have planted the spike. Enemy spotted A. One enemy remaining. Give me a moment. कौन मारा उधर रेना से भाई? You wouldn't have known if you died also. No, see, I heard the footstep and I knew they were coming to take the orb because that's what they're doing. They're trying to bait us with the orb. I was back. I couldn't hear footsteps. You have to call that, no? Bro, पूरा प्लान मैंने बोल दिया था. अगर तू वहाँ मरा है तो you deserved that. To be honest. No, bro. I didn't hear footsteps, so why will I assume that? Yeah, shut the fuck up and play the game. You're dumb as shit. Side. Sure, bro. इसका तो फ्लैश ही इतना अच्छा है ना. Phoenix plant. I have dropped the spike. मारो. One enemy remaining. Kill my allies. There. Spike planted. 80. One enemy remaining. Last hit 80 main. There. Jet, watch up. Jet ramps. Blocking sight. Toxic screen down. रेस तेरे पे आ रहा है. तेरे व्यू पे आ रहा है. सब एक करके सेज से ही मर जाते हैं यहाँ पे. Last round in the half. क्लियरली फिनिक्स तेरा गेम तो नहीं लैग कर रहा है. ये तो देख लिया मैंने अभी स्पेक्टेट करके तेरे को. This is gonna annoy the shit out of them. बेंच के लोड स्पाइक साइड को आ जा. यहाँ स्पाइक ड्रॉप करके कहाँ जा रहा तू? किल करने लौड़ा का अलर्ट हो रहा तेरे से. मेरे को तो किल करना पड़ रहा है ना क्योंकि लौड़ा जैसा तो फिनिक्स है.
क्योंकि ये तो लंडचट जैसा डुअलिस्ट है, फ्लैश करता है, आधे टाइम टीम को फ्लैश करता है। अरे stop fondling my balls, come up and then talk, bitch. You're not coming close enough to fondle your balls, bro. You're fucking playing. It's so easy to annoy you, man. It's so easy to annoy you. Now go and die in your ult. That's the guy who's true. One stage is dead. Spike down B. Last player standing. Erased. ओले फिनिक्स, दर्द हो गया। कोई सच बोल दिया कि कितना शिट है तू उस पे। कोई बात नहीं भाई, तू शिट है, शिट रहेगा। Just live with it, be proud that you are shit, tutty, latrine. Be proud of it, bro. This is a nice. Never forget where you came from. The gutters. This goes here. That goes there. Also, please keep crying. I mean, I'm loving the entertainment, so please do not stop that. वो जब तू पहली बार रोया ना, everybody was lagging, मैं तभी समझ गया तेरे को प्रोवोक करना is the easiest. So you'll either fight or you'll mute. टेक्स्ट पे लिख रहा है क्या? ऐसे? Cage triggered. Found you. Cat. Wow, my eyes are down. अरे 13 साल की लड़की, अरे यार टीनेजर। सुन फिनिक्स, प्यूबर्टी हिट करके आना नेक्स्ट टाइम खेलने मेरे साथ। Spike planted. Someone's been. Dead. Reloaded. Last player standing. इतना कोशिश किया सैबोटाज करने का, फिर भी सिर्फ 9 HP डैमेज दे पाया। कुछ सीख भाई, सैबोटाज भी नहीं करना आता, इतना शिट है ये। लेट मी गो एंड वॉमिट जस्ट अ बिट। गाइस, आई एम नॉट लाइंग, आई डिड वॉमिट। Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. इतना जोरदार कैंसर हुआ ना फिनिक्स को देख के बस। Cage triggered. Someone's been. चूतिया। टॉप टियर चूतिया ये। Spike planted. Last player standing. नाइस ट्राई रे रेज। शुक्र है एक डुअलिस्ट खेल रहा है एटलीस्ट 3 में से। जेट कोई ना, तेरा तो एम खराब है, दिन नहीं होगा तेरा। बट ये फिनिक्स तो लंडचट निकला ना यार, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही हो गया। दैट्स वेयर वी लॉस्ट द डे फिनिक्स वाज बोर्न। This goes here. फिनिक्स पापा को बर्थ कंट्रोल के बारे में सिखाता है कि नहीं? या तेरे पापा तेरे को सिखाते हैं कि नहीं कि बेटा बर्थ कंट्रोल यूज करना, वरना तुम्हारे ऐसा कोई पैदा हो जाएगा। Spike planted. Going up.
One enemy remaining. हेवन से खेल रहा हूँ, साइड पे नहीं है। All good. No charges left. साइफर के भरोसे फीनिक्स खेल रहा है। देख लो गाइस, द मेटा हैज चेंज्ड। Let them try to catch me. This goes here. Yes. अरे फीनिक्स लड़ाई स्टार्ट क्यों करते अब करता नहीं, अब क्या अकेले करूँ मैं? बोरिंग बिच। That goes there. यार यही सब अच्छा नहीं लगता मेरे को। Oh, this is nice. This goes here. Cage triggered. मत जा वाइपर मत जा, इधर है इधर है इधर है। Here. वहाँ पे। One enemy remaining. नाइस। Spike spotted B. Anyone have any splints? I may have देखा, seven परफेक्ट splints. कॉल। Multiple fingers. Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. That goes there. Nice. Go back. You will not kill my allies. Spike down mid. रेस बी हेवन खेल, गार्ड कर। One enemy remaining. We get a pick, we move in. Got it? कितना वाइल्ड स्प्रे किया वहां पे, बाप रे बाप। This goes here. भाई केजे नहीं उनका, जल्दी जल्दी खत्म कर दो उनका गेम। रेस साइड खेल रहे हैं हेवन। There. मेरे ट्रिप के साथ खेलना, यहाँ ट्रिप लगा रहा हूँ। Here. The hunt begins. Enemy spotted A. Prepare for hellfire. रेस एक पुश किया उधर मार। ओके, होल्ड करो फ्लैंक इधर फिनिक्स का। Planted. Come on, let's go. Watch your eyes. Flash. Ready. बाप रे बाप, Enemy down. One enemy वो remaining. लिटरली पीक दिया हुआ है, कहाँ से आएंगे कहाँ से देखेंगे ये सब। Last player standing. 120. Dying here would be unfortunate. नाइस ट्राई। Poison's off. अरे कोई ना यार, ये फिनिक्स हक दिया ना, इसीलिए गड़बड़ा गया राउंड। कोई ना। Check. Charges? Check. Break? No, where can I get a drop? Thanks. Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. वाइपर जब तक मैं ना बोलूं बी को वॉल मत करना, That goes there. मेरे पास वन वे है।
Spike planted. वापस चल सेव कर Player standing. Naughty omen. You say something? Sorry, ear's still ringing. ये लोग तो इतना जल्दी गिव अप कर दे रहा है ना Can I get a drop? Thanks. Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. That goes there. बाफेक हैकर है हैकर कौन हम Heaven. Spike down A. Cage Heaven. One enemy We come remaining. top heaven after rooms. Close है गलत. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else Bro. feel like that? शील्ड ले कि नहीं ले यार एक तो This goes here. बोर हो रहे हैं खाली हम इस साइड One pick up top. Yes, this should do. That goes there. This goes here. Oh, this is a nice spot. Tag. Cage trigger. अरे वाइपर वॉल डाउन कर भाई तेरे को क्यों कितनी बार बोल रहा हूँ भाई मत कर वही चीज कर दे रहा है तू Got you. मिट जा वाइपर मिट जा Tag. Buried. 120 brimstone. क्या अल्ट है क्या Get me up. Where is everyone hiding? I'll flank them. ओके 30 seconds left. मैं आवाज कर रहा हूँ तो आराम से One enemy remaining. Last player standing. Backside. You will not kill my allies. One enemy remaining. क्या फिनिक्स सीखा कुछ बंदूक कैसे चलाते हैं Clutch. You forget. I always play high stakes. This is for you. This is me every round looking at you. Yes, this should do. This goes here.
प्रेम के पास अल्ट है क्या? हाँ है। तो इस लोग बकचोदी नहीं कर सकते हैं। पीछे रह रेस, एक किल निकल ही गया ना। वॉल कर देंगे, वॉल करेंगे ना, इमीडिएट तोड़ने लग जाना। नाइस। अरे ओके Spike planted. बैक साइड। Going up. Watch your eyes. Last player standing. Match point. ये फिनिक्स से कुछ खास नहीं हो पाएगा। फिनिक्स है बस छटपटिया है, बेसिक बिच है ये काफी। जेट फुल शील्ड पे बुलडॉग मांग ले, फुल शील्ड ले बुलडॉग ड्रॉप मांग ले। Oh, this is a nice spot. The fun begins. फक देख लिया यार मेरे को। Last player standing. Spike planted. 70 kg 70 kg Watch your eyes. Always. One enemy remaining. Careful now. करेगा, देख तेरे से आगे निकला। Attackers win. काफी शिट है ये, काफी शिट था ये तो। भाई हम पूरे स्ट्रीम में अगर कोई जाके देखेगा ना, 6 फ्लैश तो मेरे स्पेक्टेट करते हुए या इसके पीछे से हम खेल रहे हैं तो आदमी दिखा है फ्लैश होते हुए। बाप रे बाप। काफी शिट था यार ये, बहुत ही शिट फिनिक्स था। अरे एक होता है एम नहीं लग रहा या नहीं हो पा रहा, दैट इज फाइन, होता है। इतना है रोड टू गोल्ड ना रोड टू गोल्ड वाला हरकत तक तो नहीं आएंगे। मेरे को लग रहा है कि वापस आ रहा है जीवन थोड़ा। एनीवे हम लोग बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इन द मीन टाइम हम लोग पहुंचे थे, अभी सबको ही मिल गया है डायगन एली में। अच्छा जो लोग कल नहीं देखे थे आज देख लें। दिस इज अ वेरी प्रिटी अमेजिंग कवर। क्या दिख रहा है यार, इतना लाइट चमक रहा है ना इस पे। एनीवे हाँ तो अभी ये लोग सब डायगन एली में सब मिल लिया है और अब सब एक एक करके जा रहे हैं। लोग ग्रिंगॉट से पैसा वैसा निकाल लिया तो अब खरीदारी के लिए लोग बढ़े आगे। नाउ ग्रिंगॉट्स सॉरी गिल्डरॉय लॉकहार्ट, उसका ये लोग जस्ट अभी पोस्टर देखा है कि ही विल बी साइनिंग कॉपीज ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी बिटवीन सो एंड सो टाइम।
Harry Potter. We can actually meet him, Hermione squealed. I mean, he's written almost the whole book list. The crowd seemed to be made up mostly of witches around Mrs. Weasley's age. A harassed looking wizard stood at the door, saying, "Calmly, please. Ladies, don't push. There, mind the books." Now, Harry, Ron, and Hermione squeezed inside. A long queue wound right to the back of the shop, where Gilderoy Lockhart was signing his books. They each grabbed a copy of Break with a Banshee and sneaked up the line to where the rest of the Weasleys were standing, Mr. and Mrs. Granger. "Oh, there you are. Good," said Mrs. Weasley. Okay. She sounded breathless and kept patting her hair. "We'll be able to see him in a minute." Gilderoy Lockhart came slowly into view, seated at a table. My headphones are now completely going away. Gilderoy Lockhart came slowly into view, seated at a table surrounded by large pictures of his own face, all winking and flashing dazzlingly white teeth at the crowd. The real Lockhart was wearing robes of forget-me-not blue, which exactly matched his eyes. What's up? अच्छा हो तुम याद दिला दिया. हाँ, अब ठीक है. His pointed wizard's hat was set at a jaunty angle on his wavy hair. A short, irritable-looking man was dancing around taking photographs with a rather large black camera that emitted puffs of purple smoke with every blinding flash. "Out of the way there!" he snarled at Ron, moving back to get a better shot. "This is for the Daily Prophet." "Big deal," said Ron, rubbing his foot where the photographer had stepped on it. Gilderoy Lockhart heard him. He looked up, he saw Ron, and then he saw Harry. He stared, then he leapt to his feet and positively shouted, "It can't be Harry Potter!" The crowd parted, whispering excitedly. Lockhart dived forward, seized Harry's arm, and pulled him to the front. The crowd burst into applause. Harry's face burned as Lockhart shook his hand for the photographer, who was clicking away madly, wafting thick smoke over the Weasleys. "Nice big smile, Harry," said Lockhart through his own gleaming teeth. "Together, you and I are worth the front page." When he finally let go of Harry's hand, Harry could... Oh, sorry. Harry could hardly feel his fingers. Ron looking like he has smoked something. Guys, you cannot make me laugh while I'm doing a book reading. "Nice big smile, Harry. Together, you and I are worth the front page." When he finally let go of Harry's hand, Harry could hardly feel his fingers. He tried to sidle back over to the Weasleys, but Lockhart threw an arm around his shoulders and clamped him tightly to his side. "Ladies and gentlemen," he said loudly, waving for quiet, "what an extraordinary moment this is. The perfect moment for me to make a little announcement I've been sitting on for some time. When young Harry here stepped into Flourish and Blots today, he only wanted to buy my autobiography, which I shall be happy to present him now, free of charge." The crowd applauded again. He had no idea, Lockhart continued, giving Harry a little shake that made his glasses slip to the end of his nose, that he would shortly be getting much, much more than my book, Magical Me. He and his schoolfellows will, in fact, be getting the real Magical Me. Yes, ladies and gentlemen, I have great pleasure and pride in announcing that this September I'll be taking up the post of Defense Against the Dark Arts teacher at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. The crowd cheered and clapped, and Harry found himself being presented with the entire works of Gilderoy Lockhart. Staggering slightly under the weight, he managed to make his way out of the limelight to the edge of the room, where Ginny was standing next to a new cauldron. "You have these," Harry mumbled to her, tipping the books into the cauldron. "I'll buy my own." "Bet you loved that, didn't you, Potter?" said a voice Harry had no trouble recognizing. Neither did I.
He straightened up and found himself face to face with Draco Malfoy, who was wearing his usual sneer. "Famous Harry Potter," said Malfoy. "Can't even go to a bookshop without making the front page." "Leave him alone. He didn't want all that," said Ginny. It was the first time she had spoken in front of Harry. She was glaring at Malfoy. "Potter, you've got yourself a girlfriend," drawled Malfoy. Ginny went scarlet as Ron and Hermione fought their way over, both clutching stacks of Lockhart's books. "Oh, it's you," said Ron, looking at Malfoy as if he were something unpleasant on the sole of his shoe. "Bet you're surprised to see Harry here, eh?" "Not as surprised as I am to see you in a shop, Weasley," retorted Malfoy. "I suppose your parents will go hungry for a month to pay for that lot." Ron went as red as Ginny. He dropped his books into the cauldron too and started towards Malfoy, but Harry and Hermione grabbed the back of his jacket. "Ron," said Mr. Weasley, struggling over with Fred and George. "What are you doing? It's mad in here. Let's go outside." Well, Arthur Weasley." It was Mr. Malfoy. He stood with his hand on Draco's shoulder, sneering in just the same way. "Lucius," said Mr. Weasley, nodding coldly. "Busy time at the Ministry, I hear," said Mr. Malfoy. "All those raids. I hope they are paying you overtime." He reached into Ginny's cauldron and extracted from amidst the glossy Lockhart books a very old, very battered copy of A Beginner's Guide to Transfiguration. "Obviously not," he said. "Dear me, what's the use of being a disgrace to the name of a wizard if they don't even pay you well for it?" Mr. Weasley flushed darker than either Ron or Hermione. "We have a very different idea of what disgraces the name of wizard, Malfoy." "Clearly," said Mr. Malfoy, his pale eyes staring to Mr. and Mrs. Granger, who were watching apprehensively. "The company you keep, Weasley, and I thought your family could sink no lower." There was a thud of metal as Ginny's cauldron went flying. Mr. Weasley had thrown himself at Mr. Malfoy, knocking him backwards into a bookshelf. Dozens of heavy spellbooks came thundering down on all their heads. There was a yell of "Get him, Dad!" from Fred or George. Mrs. Weasley was shrieking, "No, Arthur, no!" The crowd stampeded backwards, knocking more shelves over. "Gentlemen, please, please!" cried the assistant, and then, louder than all, "Break it up there! Gents, break it up!" Hagrid was wading towards them through the sea of books. In an instant, he had pulled Mr. Weasley and Mr. Malfoy apart. Mr. Weasley had a cut lip, and Mr. Malfoy had been hit in the eye by an encyclopedia of toadstools. He was still holding Ginny's old Transfiguration book. He thrust it at her, his eyes glittering with malice. "Here, girl, take your book. It's the best your father can give you." Pulling himself out of Hagrid's grip, he beckoned to Draco and swept from the shop. You should have ignored him, Arthur," said Hagrid, almost lifting Mr. Weasley off his feet as he straightened his robes. "Rotten to the core, the whole family. Everyone knows that. No Malfoy's worth listening to. Bad blood, that's what it is. Come on now. Let's get out of here." The assistant looked as though he wanted to stop them leaving, but he barely came up to Hagrid's waist and seemed to think better of it. They hurried up the street, the Grangers shaking with fright, and Mrs. Weasley beside herself with fury. "A fine example to set to your children. Brawling in public. What Gilderoy Lockhart must have thought." "He was pleased," said Fred. "Didn't you hear him as we were leaving? He was asking that bloke from the Daily Prophet if he'd be able to work the fight into his report. Said it was all publicity." But it was a subdued group who headed back to the fireside in the leaky cauldron, where Harry, the Weasleys, and all their shopping would be travelling back to the Burrow using flu powder. They said goodbye to the Grangers, who were leaving the pub for the Muggle Street on the other side. Mr. Weasley started to ask them how bus stops worked, but stopped quickly at the look on Mrs. Weasley's face. Harry took off his glasses and put them safely in his pocket before helping himself to flu powder. It definitely wasn't his favorite way to travel.
And that brings us to the end of chapter 4. That was at Flourish and Blots. What were you guys having fun about? Cannot name us not clearly. हम आगे जब टॉपर ऐसे पढ़ता था ऐसे ही हंसाते थे. Dude needs Spotify podcast. The accent, loving the Potter. Oh man, I'm so past. I hear boah. Next, after the next game, we read The Whomping Willow, which has got to be one of the biggest chapters, I think. Oof, it's a huge chapter. Fucking 20 pages. 21. Peanut butter. Woodcutter. Anyway, I need some quick snacking. I'll be back in a sec. Also, कितना टाइम हो रहा है अभी? 22:49. Assuming 10:55 तक मेरा मैच चालू हो जाएगा, which means 11:40 पे अगला बुक रीड होगा. 20 pages front and back. नहीं. हाँ, front and back 20 pages. Yes. Front and back. Yes. Next read is around 11:40ish. So if you're actually here just for the book read, I'm telling you 11:35 के आसपास आ जाए. जैसा मैंने explain किया है. If you don't know how the game works, when you see somebody is reaching the score of 13, it's gonna be somewhere over here on the screen. That means the match is about to end. 13, whoever reaches 13 first wins. So if you come and see that I'm watching, I'm playing, then stick around for a while. By the time I end the game, and then we'll. 11:40 पे. Yes. Okay, I'll be back soon. Match found. Left. Let's go. नहीं ये तो नहीं खेलेंगे. ओमन लॉक कर लिया और हम प्रेम के अलावा तो कुछ खेलेंगे नहीं. Oh my God! भगवान मेरे साथ है. हम नहीं देखे क्या नाम था? Match found. अरे यार. Patchy boy. They think I'm an old dog? I'll show them just how many tricks I know. क्या खेलूँ मैं? Usually तो open खेल. ना रेना. नहीं स्मोक है ऑलरेडी. हाँ दिख रहा है. खेल ले. देख.
You? KO level with me. Is there anything you can't do out here? Negative. Yeah. सेंटिनल जीत गया. Yes. एनजीबी ब्रो बहुत अच्छा है. Bro manifested hard. It's Tuesday, ain't it? It is. Smoke's down. Spike down. Lord, B. Oh, sorry. बस काफी. One enemy remaining. 84 last 84 low. Let's go. भाई. कौन मारा इतना? Raise. ठीक है भाई. Giggity. Nice. Keep it that way. क्या? Like मारो what? मैं देखा नहीं हूँ भाई. मेरे को enough reference बस reels और shorts से ही पता है. Same bro. मैंने देखा है. But funny as fuck तो लगता है देख. ये जेट तू मिड पे जाना. मेरे को इधर बकी करने देना स्मोक में. फिर से बी पे. Launching smoke. यार मुझे ऐसा क्यों होता है? मैं जेट पिक करेगा. अरे यार. Last player standing. अरे 25. ये क्या हुआ? सब यहीं आ रहे. होल्ड कर. प्रेम आएगा. स्टिंगर था ना. अच्छा सब यहाँ नहीं आएंगे. बी खाली है. स्टिंगर था, नहीं लेना चाहिए था स्टिंगर. वाह यार मेरा तो बकी था. मार के चला गया. लॉल. Spike down mid. राइना 44 लो है. अब सब चुप हो जाओ. 25 दिया मैंने. अरे नाइस ट्राई रे. डर गया होगा. मुझे लगा नहीं कि इतना लॉन्ग रेंज लेना पड़ेगा. वैसे थोड़ा ब्रेन लगा. वो रिप क्यों लिखने जा रहा था और थोड़ा मुझे जेट पे भरोसा नहीं होता यार. गाइस उनका एक एफ है. ठीक है. और हमने तब भी एक राउंड रख दिया. नहीं वो इस राउंड एएफके गया भाई. पिछले राउंड था वो. हाँ लेकिन एडवांटेज है ना एक राउंड. हाँ. अरे ब्रिम तुम्हारा आवाज ऐसा कॉन्सर्ट जैसा क्यों आ रहा है? ओह सॉरी साइफर. भाई क्या ही मैं पागल हो गया हूँ. ब्रिम जो तू ही है. बोला ना पागल हो गया. Smoke's down. लॉल. देखो सारे में ये 130 क्या दिया था उसको? ब्रिम लो 130. पीछे रे स्मोक कर रहा हूँ अभी मैं. I know exactly where you are. ब्रिम 130 मिड. एंड ये जेट का गन ले. ब्रिम 130 दोनों लो है. साइफर 55 है. बी प्लांटिंग.
Weapon here. गन ले Spike planted. साइफर कितना है? ब्रो वैंडल है ले लेना साइफर रुक जा यार 55 कैसे नहीं वेट करिए आराम से ये क्लियर करना पड़ेगा एक साइड पे साइफर साइड दोनों शायद दोनों स्मोक नाइस मॉली डिफीज करना One enemy remains. लास्ट वन शॉट What? नाइस नाइस ले लो Spike defused. अंदर जा गानी गाना गुड कॉल लो का यार वन शॉट यार हाँ 40 में ही मर गया वो 40 40 में मर गया ब्रो वो चच्ची है ना वो लैट्रिन ड्रिप हो गया वहाँ पे इसी बात पे गिमी यस सर पता नहीं मैं खुद को साइफर क्यों समझ रहा हूँ तब से मैं रेरा समझ रहा था 2 मिनट नहीं मार से भाई बी के बाद सामने तो बी के छूट गया मिड पुशिंग ए शॉट Spike down. मरा तू पीछे ए मेन पे भी है स्पाइक ए मेन पे है आ जाओ दो यहाँ पे दो Launching smoke. रेना इधर ही था रेना इधर ही था कौन से गए There. अंदर नहीं आया दोनों मिनट One enemy remaining. वही ब्रो गन लेना हाँ ये That's the way. Thanks. मैं भी खेलता हूँ अरे नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से Need equipment. छोड़ो ना है मेरे पे भी है हाँ यार मेरा थोड़ा पैकेट लॉस हो रहा है मैं पीछे खेल रहा हूँ इस राउंड स्मोक्स के लिए बस मेरे को कॉल दो कोई ट्री देखो मैं ट्री नहीं खेल रहा हूँ पैसिव हूँ मैं बी बाहर है Smoke's down. बैड नाइफ मिड पे भी है अरे ए से भी आ गए मिड से भी आ गए अरे इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए शॉट एक और है सेन लवर्स इन टीम ये तुम देखे ही नहीं। 3 2 कैसे पता मैं मर गया Last player standing. थोड़ा सा जा Give me a call. अरे तो पर है सेव कर दे एंटी माय बैड मतलब पता नहीं कुछ नहीं कर सकता Distracted once I reveal them. Make sure to take advantage. स्काल देख के नाइफ देख के करना चाहिए था मुझे क्यों मेरे को ड्रॉप देना Thanks. जेट ट्री देख भाई तू ट्री देख मैं इधर एमेन पूरा होल्ड करता हूँ मेरे को ना ट्री और एमेन दोनों होल्ड करने के चक्कर में मर गया पिछले राउंड मेरे को कॉल देना अगर बी होता है तो मैं इमीडिएट स्मोक गिरा दूंगा फिर जेट है Launching smoke.
Enemy down. Building, क्यों building? Smoke's down. क्या दे? I know Yeah, yeah. exactly where you Ooh. अरे ओले साइफर का पिस्टल सेन लवर अब हम समझे। Spike down. Smoke पे आता मारो। One enemy remaining. अटैक करो भाई उस पे। जनी पे वो। ए जेट को ऑफ ले लो हेवन पे। क्यों गोल्डन कर किया मैंने? बढ़िया भाई, डिजर्व करता है वो। Can we celebrate? Can I get a drop? इनके पास कोई है जो खड़ा हो गया अल्टी या कुछ करेगा? ओए भाई तू बेच इससे मांग कोई बाहर से वो कोई मैं कह रहा हूं क्यों से मांग लगा दे क्या बोल रहे हो नहीं इसमें? साइफर रिक्वेस्ट नहीं दो लोग में टी-शर्ट भी हाँ मतलब Smoke's down. remain कहाँ कर दिया भाई 180 120 है वो टी-शर्ट be push ये पे है? तीन लोग एटलीस्ट हाँ हो रहा है मतलब लेकर अंदर आए नहीं है बट तीन लोग हैं फ्लैश लेना क्रॉस लेन इजी खेलो वो अगर अंदर जाना चाहते तो जाने दो उनको। एक राइट साइड है राइट एक बाय इधर है क्या तेरे लेफ्ट हाँ वो चला गया 30 seconds left. वो साइड गया वो प्लांटर एक सिटी Spike planted. सिटी आई थिंक One enemy remaining. Let's go. I'll do it. Everything there was there. लॉल मत कर भाई नहीं ये मत कर Hold on to your hats. बेफालतू में टॉक्सिक हो जाएंगे भाई वो होने दे भाई, मैं तो चाहता हूँ वो हो। What are they doing? Hey Cypher, Sen Classic. Play's not working. Call an audible. Give me the Sen Classic. बंदल I need this. Yeah, nice. I need this. Woo. Brim Diff, let's go. उसको ड्रॉप दो। अरे क्यों तू दे देना, मेरे को हाफ शील्ड बन रहा है। अच्छा छोड़ा, वो मांग नहीं सकता। रहने वो मांग नहीं सकता। Smoke's down. Launching smoke. और है क्या? नहीं all three Spike planted. रुक दूसरे पिंग पे मैं अल्ट मार दूंगा अगर अंडर हेवन होते तो। पुश मारना दोनों साइड। Stim beacon here. अंडर ना से क्लोज है। Prepare for hell to skies. Launching smoke. अरे यार ये वन वे कैसे गिर गया? माय बैड। अरे यार ये वन वे गिरा दिया मैंने गलती से। खुद के लिए ही गड़बड़ हो गई।
shoot the bad guys. How's वो that? चीज़ों को कैसे पड़ा देखा क्या किसी ने? क्या? नहीं हेडशॉट बहुत खराब पड़ा। भाई मैं सेव कर रहा हूँ, मेरे पे पैसा नहीं है। अच्छा हाँ देखा मैंने देखा क्या फ्लिक था। सर्पर पे मारने जा रहा था फिर उसको लगा। हाँ कोई ड्रॉप दे दो मेरे को बाकी। Smoke's down. I know exactly. अबे यार दोनों बाहर है, एक के बाहर है दोनों। क्यों बस तू मिड होल्ड कर ले यहीं से, बस मिड होल्ड करके रख। अरे के डाल तो रखा है। अरे भाई साइपर। I'll teach them to respect their elders. भाई स्मोक में बैठ के बकी करने का पता नहीं एक अलग ही टाइप का खुशी वाला फीलिंग देता है मेरे अंदर से। सच हैप्पीनेस। वैसे नाइफ किधर गया वो? पता नहीं। Get out of my way. बी है क्या? Oh my god. What the fuck? Sorry. One enemy remaining. Spike down mid. गया ट्री से गया, अभी जा रहा है। पकड़े स्लो बैठ। इधर आ गई बात। वन फुट इधर। रो मत करना ब्रो। रेस भी जाना वहीं से घूम के, इधर मत आ। ऊपर से आ रहा है। भाई किसके पास है? हाँ मिड है क्या? भाई आ रहा है रेस पे आ रहा है। तेरी क्या पर गया ये बंदे। यार मेरे को नाइफ करना था। Fuck. रेस पीछे। अब वो तेरे को भी चेक करेगा आगे। I don't think so. चेक करना चाहिए। भाई मैं चाकू मारने के चक्कर में लास्ट में पैनिक कर गया। ओह ये ला फैंटम देना रेस। मैं कहता नाइस। Can I get a drop? बैंडल कोई ट्रक पे बने क्या कोई? बैंडल मान सर्पर। हाँ ट्रिक में फंस गया था ना इधर। तभी मैंने मिड लगा लिया, मिड आएगी। मैं नाइफ देख रहा था कि आया कि नहीं, लाइनअप चुक गया। What the fuck? Jet only. Smoke's down. कोई गिर गया। नहीं मैं इस बार अंदर नहीं स्मोक के। Can't use that. बराबर। अरे यार जेट ने मेरे पे डिप कर रहा है भाई बार। उसका 3 किल मेरा ही है। अरे यार भाई मैं ट्रिगर रखना चाह रहा था वहाँ पे। Spike planted. 80 प्रेम 80 रेना हील कर लिया होगा लेकिन। Last player standing. क्या टाइमिंग? सेव करना है तो। Enemy down. नहीं एक मेरे को मिल रहा। तू मर रहा है नहीं तो। One enemy remaining.
अरे क्या कर रहे हैं भाई? वेरी रियलिस्टिक। ये सही में कितना वियर्ड ट्रिप था, बाप रे बाप। चलो मर गया। Before the switch. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उन पे ना या तो वो शील्ड लेके आएंगे राइफल के साथ या फिर यूटिल, तो उनके पास सब करने का नहीं है पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट साइफर। साइफर ले आएगा, बाकी लोगों के लिए दिक्कत है। जेट ऑफ है क्या? नहीं है। ओके। अरे बाकी जाओ इसमें खेल स्मोक में। Get in. Smoking. Jet भी cool है. Launching smoke. कैसे भाई एक छोटी बगल Spike planted. भाई मारना। My ult's ready. Last player standing. तो अंदर कैसे चला गया? वो उसका स्मोक बड़ा था, खराब स्मोक दिया था वो। Shutting them down. One suppressed. Flashbang. What? Flashbang. भाई मेरी भाई क्या हुआ भाई? Switching sides. चाकू का लालच यार, सही में उस समय तो चाकू का लालच ही हो गया। अरे यार मुझे हर बार एक ही लाइनअप करना चाहिए। क्या किधर जाना है? साइफर अगर होगा सप्रेस तो ही जाऊंगा मैं, मेरे को कुत्ते की मौत नहीं मरना है वैसे। किधर खेलता है? एज अ साइफर मैन किधर खेलते हो तुम? आजकल तो ए पे दिख रहे हैं मेरे को साइफर मेंस, पता नहीं डी पे कहां पे खेलते? लेन पे रहेगा एक ट्रिप गारंटीड, एक स्विच हो सकता है जेट को पकड़ने के लिए। स्मोक्स रेडी। Smoke's down. Stim beacon down. कैसे इधर है? इधर ही है क्लोज में। भाई मैं बोल रहा हूँ कि बाक Down B. Last player standing. One enemy नीचे ही है। भाई अगर ट्रिप है तो मेरे को जाने दो, पहले नेड मारता हूँ। ट्रिप डालना उधर। एंटी यार जबरदस्ती हम लोग ट्रिप में फंस के मरे, यही चीज बोल रहा था मैं। इधर क्या बोलेगी साइफर? मैं नेड मारता हूँ, तुम लोग घुसो मत। हां ठीक है, बीच चल रहे हैं। हाँ ठीक है। अभी कहाँ था ट्रिप्स? किसी को भी दिखा? हां दिखा मेरे को। दिखा ना? ठीक है। क्लोज वाला था। अरे ए मत जाओ, अभी तो हम लोग फुल सेव मारो, फुल सेव मारो। जेट मत ले शील्ड और ये गन। अभी हम लोग के पास एडवांटेज है, राउंड्स है अपने पे। मिड चलो, सारे मिड चलो। मैं स्मोक कर रहा हूँ। हाँ ए शॉट कर रहा हूँ स्मोक, और यहाँ कर रहा हूँ स्मोक। Launching smoke. Launching smoke. अरे यार मेरे पुश पीछे 10 बार बोल रहा हूं। अरे यार ठीक है सेव राउंड है। Defender spawn. Yes. एक और किल भी निकल गया तो भाई हमारे आगे पीछे हर जगह है। अरे एंटी भाई तू बी पुश चिल्ला रहा है, हमारे सामने भी लोग हैं। हाँ वी हैव गॉट टू डील विद देम आल्सो। तेरा चिल्लाना वहां हेल्प नहीं कर रहा है। हम लोग को समझ में आ गया बी पुश है, लेकिन हमारे सामने जो लोग हैं उनसे तो नहीं पड़ना होगा। सही में कॉल दे रहे हैं, गांड फाड़ रहे, समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। वो गांड फाड़ना चाहता था। अर्जुन आ रहे हैं पीछे, चलो देखो वो। अरे बी फेक करो और स्पाइक रेस टू स्पाइक लेके आना, इनको बी फेक करने दे। अच्छे से बी फेक करना। मरना मत ब्रो। साइफ केओ का नाइफ आएगा तो फंस जाना सब। भाई नाइफ तो और लूंगा, प्लांट करूंगा। और मत ले, रुक।
मैं अकेले अंदर जाऊंगा। तुम लोग को बी पे आवाज करो। हाँ बोलना। यार मुझे स्मोक चाहिए। स्मोक चाहिए किधर? ट्री में ही क्या? ठीक है मैं ट्री के लिए करता हूँ। अबे यार रेस तेरे को बोला था मैंने मत ले। Spike down. 108 है ब्रिम, उसको मार देना और एक हेवन पे है रिना। One dead. Eagle-eyed. अभी जा सकते हैं, अभी भी टाइम है। Retrieve the spike. Player standing. Spike down A. जल्दी आ रखे हो भाई। 30 seconds left. ब्रदर भाई तू साथ उतर निकल जाता राउंड। वो सारा नहीं करता, वो स्मोक नहीं करता, हम घुस जाते एकदम आराम से। भाग। हेवन से जा। थोड़ा जल्दी आ रहा है। 10 seconds left. ये ना ऐसा ले ले बस। भाई रेस तेरे को मैंने कॉल दिया कि मत ले, और तूने लिया और उस वजह से मर गया मैं। भाई वो और नहीं लेता ना, उनको आइडिया नहीं था, मैं एकदम इजीली शिफ्ट वॉक करके पूरे साइट में घुसने वाला था। मेरी बात सुन लो प्लीज। बक बर्बाद कर दिया, मन नहीं कर रहा। बक इधर आओ। देखो पहले जेट को मारो और सैपर का ये वाला पहले ट्रिप तोड़ो, उसके बाद रीसेट करो। मैं आराम से एंट्री कर सकता हूँ, अभी अल्ट है। सचल कर। हाँ तो पहले जेट को मारो क्लोज। हमको नहीं, आई डोंट केयर। निकाल लो राउंड, निकालना। कैसे मार गया मेरे को? रुक जा। एक एफ किया अपना ब्रिम में लो। 7 सेकंड में लाइफ। ब्रिम एफ के है ब्रो। जेट रुक जा। सही जगह। ब्रो स्पाइक। ये स्पाइक तो लो एफ के, तो कहाँ जा रहे हो साइट में? I have the spike. I know exactly where you are. 30 seconds left. ये आएगा ही नहीं आएगा? क्या लगता है? बड़ी मारियो दे। अरे ना ना। ये में होगा। Ten seconds left. Spike planted. Smoke's down. ब्रिम आ गया। Last player standing. My bad. थोड़ा Launching smoke. क्लोज चला तो। Molly. Stim beacon down. वो वाइन पे बैठा था। वेट, मॉली गया क्या? मॉली तो गया होगा, लेट गया। अच्छा अच्छा। Don't get shot. Human brains are hard to replace. ओके, मिड टू बी करके आ जाओ ना। हाँ बी इजी एक्चुअली, मिड टू बी करता। Reloading. भाई बी इजी बहुत है। जेट को मारो, साइफर को इधर नेड मारता हूँ। तो होल्ड करो ना, पीछे जेट पुश कर रहा है तो होल्ड करके रखो ना, खुद अटैकिंग मत दोनों। क्यों रुक जा, इधर आप पीक ले बस, खड़ा रह के। नहीं नाइफ मत कर, जेट को आने दे, लालच दे उसको। सॉफ्टवेयर सप्रेस है। Smoke's down. Stim beacon here. Reloading. Walking side. Hold on. कैसे नहीं मरा? Spike down B.
क्या बकचोदी है। बीमन है, एक बीमन है। One enemy remaining. बीमन Hiding. क्या कर रहे हो तुम I लोग? have retrieved the spike. एक साथ ही बैक करो। I find them. I kill them. Simple as that. वेट करो ना मेरे उसका दिमाग है कि रोटेशन पढ़ने वाले था। इसी सप्रेसर फिर से चलो बीती। हमें एक राउंड है ना फुल पुश करना चाहिए। अब ये सारे नहीं खेलेंगे। जेट खेलेगा अल्ट पे, जेट खेलेगा अल्ट पे और उसको कोई ब्रिम को कोई बाई दे देगा। ब्रो कुछ भी मार के आ रहा है मेरे को बैठ करेंगे। चल Launching smoke. Enemy beacon down. Plant the spike. बोट हाउस चेक कर। मैं लाइनअप पे जा रहा हूँ। Spike planted. My ult's ready. कहीं मत जाओ। सुनो, दो एक मिनट से आ रहा है। अरे भाई एक मैक्स टैब आ चुका है। यार एक मेन है। रेस तेरे को फर्स्ट लेन देखते रहना होगा क्यों को कवर। One enemy remaining. वेल प्लेड। ले 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 वाला फैंटम लेना। अरे बैग से कुछ भी मार के आ मेरे को ये। Let's get back out there. देना। क्यों? मेरा फैंटम ले ले। कुछ चला रहा था अल्लाह। कुछ भी चला रहा था ये डेली करके। ये ले एक्सचेंज कर फैंटम। क्यों फैंटम दे दे क्यों फैंटम दे दे। है ना? हाँ। दे दो ना कोई। उसको फैंटम दे भाई, तेरे को दूंगा मैं। एक बार मेरी अरे मैं भूल गया कि मैं क्या हूँ। पागल साला। अरे हेवन पे दोनों स्मोक चाहिए या एक ही? बस कोई नहीं है। Fully smoked. Dim beacon down. One कैसे है वो? अंदर स्मोक में। Let's go. अबे यार कवर गाइस। Reloading. There. fuck यार। लेके खेल रहा है। Spike down A. Get out of here. Satchel out. Last player standing. I think main है वो। अब जा कर क्या है? बस मैं टूट गया यार। 30 seconds left. I have retrieved the stage. क्या अच्छा ब्रिम को मारना था। भाई 1-1-1 कैसे लगा उसको? अरे उनका जेट एफ के रेज एक सैचल भेज के गन देना। Need equipment. चलो फिर से चल। अरे सैचल एक भेज देना। कांटेक्ट फुल शील्ड ले ले। कांटेक्ट पे कर। भाई डबल सैचल चाहिए मेरे को इसलिए। तो फुल शील्ड तो अभी भी नहीं ले सकता है क्या? नहीं 6 अच्छा ओके। जेट मैं साइफर को सप्रेस करता हूं भैया। नहीं रुको ए फेक करने दो। केओ को ए फेक करने दो। थोड़ा सही नहीं हो रहा है। अब चलो साइफर ये लेगा, साइफर ये गन ले। ये करने पहले। Smoke's down. कहाँ से मारे जैसे? Right here. आजा भैया आजा।
आ जाओ। केओ उधर से ब्रिम आ रहा हो सकता है, देखना ब्रिम या केओ किसी एक का फुटस्टेप था तेरे लेफ्ट में। हाँ मैं छिपते हूँ। नाइफ हो गया वो। हेवन जा रहा है शायद, हेवन स्मोक दे रहा हूँ। जा मैं कहाँ जाऊँ? Launching smoke. प्लांट करने पे मैम। जा पीछे जा, इधर मार इनको इसके बाद। I know exactly. भाग मार इसको मार। और नेवर माइंड। Player standing. Spike down A. ओके। क्यों चेक करना भाई? बोला भाई मेरे सुनो। अरे यार पता नहीं। दो करके चलो। Show me where to go. दो मेरे साथ, एक मेरे साथ। पहले गनफाइट जीतो, पहले गनफाइट जीतो। ये कैसे रेस मेरे साथ आ। मेरे को दे। नहीं अरे मेरा बात सुनो प्लीज, मेरा कॉल सुन लो एक राउंड। सब ए पे जाओ, रेस मेरे साथ रहेगा यार। अबे बाकी सब ये राउंड सेव कर लो, हार गए ना सालो, दिक्कत रहेगी ये राउंड। जाना ए फेक करना, रेस पीछे रहे, नाइफ आएगा। होल्ड कर, इनको फेक करने दे। मैं स्मोक गिराने जा रहा हूँ भाई, उनको पता चलेगा। रुको ना, एक स्मोक गिराऊंगा अपने आप वही भाग। तुम लोग थोड़ा सा और वहां पे हलचल करो। इधर तो कैम है। चलो वहां पे है लेकिन। दो लोग हैं। चलो खाली बी खाली, कल बता रहा हूं बी खाली, चलो। अबे यार। Spike down B. गए वो स्टेयर्स गया है। तो नाक लो I have नाक। the spike. Enemy spotted B. Lock in sight. Our spike carrier is killed. What the fuck? Your Target fault. lost. No charges left. Last player standing. Thirty seconds left. Match point. Stay in range of my stim beacon, and we'll mow them down. Bro 5v4 है, आराम से खेल सकते हैं। स्मोक नहीं है मेरे पास, रुक जाओ। टाइम रुक जा, मेरे पास भी वो नहीं है। रुक जा, एक पे यहाँ पे गोली मार तुझे। अबे यार तो बोल रहा हूँ मार। एक साइड है, लेन सुन लो लेन। Spike down. Defender. ना बोलेगा। Last player standing. This is Defenders win. जा भाई खुद जा। नो बुक रीडिंग, हम एक और मैच खेलेंगे। लेन गाड़ में डाल ले लेन। पागल, इतना चिची आ रहा है।
अरे हम समझ गए साइफर के अल्ट में लेन दिख गया था, लेकिन हम तो क्रॉस करके निकल गए थे ना। हम सुनना चाह रहे थे कहाँ पे खड़ा है, तो ना बोल रहा था बाप रे बाप। जब तक हमको साइफर वापस से दिखा पिंग होके, हम उसको मारते गोली नहीं। Match found. सबसे पहले तो ये लोग का एक साथ म्यूट करने का सिस्टम करना था मेरे को। Don't say it. Don't say it. Don't say it. Don't you dare say it. रो देंगे आज हम। Cannot. लेंगे तो ब्रिम। नहीं ब्रिम नहीं लेंगे, तो वाइपर ले ही रहा ऑलरेडी। हम खेलते थे इस पे से, जब वापस साइज बॉक्स पैच वर्क होके आया था ना अभी, तो हम स्टार्ट सेज से किए थे। और क्या स्टार्ट था, गजब। मतलब शायद पहला 5 मैच जो हम खेले, और सेज के साथ हम सिर्फ यही खेलते हैं। कैसे हार गए लास्ट मैच 5v4 भाई, क्या ही बोले, खराब खेल रहे थे हम, और क्या। हम अपने बारे में ही बोल सकते हैं बस। बहुत खराब खेल रहा था। Couldn't brim like I should have brimmed after taking brim. ये कौन सा क्लास है? मिट्टू भी करना है। साइफर के ट्रिप से बच जाएंगे कहीं पे भी होगा तो। टीम डिफ आई गेस। हाँ टीम डिफ ही था, अब क्या ही बोले। They were just better. Read us well. They kept reading us. We kept giving them the book to read us. फिर ट्रिप हो गया यहाँ पे फिर ना। हील है क्या? स्काई और देना है। Enemy A. There. Spotted A. Toxin screen down. Spike carrier down. Spike down. हील दे। अबे दोनों रैंक है, दोनों ऊपर है। 50-50 दिया। Last player standing. One enemy remaining. सामने ही है। राइट। Battlefield. 30 seconds left. थोड़ा देर चिल कर यहाँ पे। Stand tall. We are Valorant. We are fighters. अभी फोर्स बाई कर लेते अगर पैसा, अगर स्लो आर्म नहीं लिया तो दोनों लास्ट राउंड।
चेंबर ट्रिप को यहाँ पे लगा। Here. I mean उतना दूर नहीं, बीच में लगा कहीं दीवार के। अबे चेक करो चेक। Last player standing. Spike down A. We turn to dust. I have the spike. Wall raised. 30 seconds left. राइट में नीचे। अबे देख रहा हूँ ना मैं राइट ऑलरेडी। उसको ऑलरेडी तेरे को क्यों बोलते रहना राइट है राइट? देख ही रहा था ना, उधर ही देख रहा था ना। अरे तूने 1 सेकंड के लिए ऊपर देखा इसलिए बोल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, तो मेरे को चेक करना है ना ऊपर है नीचे है किधर है। मैं खेल रहा हूँ ना ब्रो उधर। How difficult it is to understand? नहीं my bad, मैं उधर मिस कर दिया उस पे 70-80 मारा, लेकिन मेरे को मेरे हिसाब से खेलने देना जब मैं 1v1 में। ओके ब्रो ओके एंटी। सोवा नेट फेंक ना इधर। Here. Here. Grenade. Hawk out. Get it. Raptors रहना ही। Reloading. Very bad aim man, very bad aim. Hawk out. Blinded. Enemy spotted A. Spike planted. Raptors. Nice. Last player standing. अरे नहीं, बहुत खराब वहाँ पे स्प्रे किया। Should not have sprayed like that. ब्लेड्स को भी बाई कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेव करते हैं। अरे एक राउंड मिड से ट्राई मारते हैं ना। मिड बहुत स्ट्रांग नहीं है। साइफर का एक ट्रिप रहता है किचन के एंड पे। क्या बाय करना है कि नहीं? नहीं सेव कर लेते हैं। सेव। Don't let me down now, yeah? वाइपर एक वॉल दे। हाँ ठीक है, स्मोक दे दो। Somebody out. साइफर का ट्रिप रहेगा किचन। Opponent's kill. For you. Spike carrier down. Spike down. 1 है ना? Nice. 50 KO साइड पे। Player standing. तेरे लेफ्ट में सोवा है। अरे 90-80। One bullet per enemy. That should be enough, yes?
Bomb buddy out. Hawk out. Blinded. Satchel out. Nowhere to run. Spike down A. Nice, good trade. One enemy remaining. My ult is ready. I have the spike. क्या ही बोल रहा है? Heaven. Well played. It's a shame you have to die, but you are not part of my picture. 别泄气. Now let's turn this around. आ जाओ बी चलते हैं अब. मेरे पास रेज है. कोई आगे आगे मारा तो इमीडिएट उठा दूंगा. Cheers, mate. स्काई अल्ट भी कर दे तू इस राउंड. I must stop their Reina. Big name. Hawk out. Get blinded. Seek them out. Two strong. One flank. Share flank. Spike down B. Last player standing. अबे wall down. Team Ace. कोई ट्रिप छोड़ दो यार. वहाँ पे फंस रहा हूँ मैं उस ट्रिप में वॉल करते हुए. They're going to scatter from my stuff. Yeah. Super easy to pick up. Can I get a drop? Fuck you all. ये मैच हम हारे या जीते अब हम बस ऐसे खेलेंगे जैसे मेरा मन करेगा. Fuck you all. Spike ले लो भैया. Can I get a heal? For you. Viper's low. Reina's picked up. Guess I died. अबे उसको हेड 70. So was garage. Spike carriers down. Spike down. Attacker spawn. One down. Cypher भी इधर है. He is very low. अबे very low. Viper A side, so was on Last spike. player standing. So वो बैकस्टैब आ रहा था. दोनों सेम जगह पे होंगे. इस बॉक्स के पीछे क्लियर करना. One's on the left though. 30 seconds left. One enemy remaining. No Viper. Hawk out. I got the spike. 10 seconds left. Kill. Oh, well played भाई. Nice shot यार. I should play. हम ही खराब I खेल am रहा हूँ. so proud. Keep fighting. अगर तुम्हें prelude चाहिए लेकिन सामने में prime है, just pick up the prime. I'll give you the prelude. Can I get a drop? Don't give them ground. Thanks. Scout destroyed. Boom. Ready. Hawk out.
The hunt begins. Hawk out. Grenade. क्या कर रहे हो? 120 साइफर बैक साइड. अबे दोनों को 100 दिया. साइफर 120 है. मर मत I know exactly where you are. Last player standing. Toaster is broken. One enemy remaining. 30 HP है ये. That's it. Last scene. बैक साइड. लास्ट सीन बैक साइड था. यार मैं ही विफ कर दिया साइफर पे. Should have been my kill. I got this. Here. Here. सेव कर. क्या करना चाहिए मेरे को? रेस सेव कर ले. रेस सेव कर ले तू भी. In we go. No? Hawk out. Okay. Wait for 5 seconds. ऑर्ब ले ले. वाइपर ऑर्ब ले ले. Blind. Grenade. Barrier created. Plant. Reloading. Nowhere to run. I'll spike it down. Spike down A. अरे यार दिख गया था उसको. Last player standing. Flawless. कितना रिड्यूस किया वो लोग? एक ही रिड्यूस किया क्या? These are okay, but I will also bring my own. No offense. Viper, come here. हाँ बोल. एक स्मोक का है ना ये. Stand here and look at this point and just और जंप करके स्मोक डाल दे. इधर देख. इधर देखे. इधर जंप करके नहीं W दबा के रख और स्मोक डाल. अपना दोनों अपना आइडिया दे रहे हो. मुझे कौन सा करना है? अरे मेरे को मालूम है. वाइपर में नहीं. इधर देख के ना जंप और स्मोक डाल. कहाँ स्मोक डालना है बोलते मैं डाल दूंगी वैसे भी. Rafters, heaven. There's one behind this. The black box. रुक. अंदर आ. मैं अल्ट करती हूँ. 1 सेकंड 2 सेकंड वेट करके अंदर आ. Train harder. Spike down A. Nice one, Sage. Sova removed. Cypher is out. अबे ऊपर बॉल भी. Last player standing. Spike down A. अरे यार 148 छी पूरा हक दिया. ये नहीं काम कर रहा. बी चलते हैं. हाँ बी चलो. मैं मिड से लेट पुश मार सकता हूँ. मिड से लेट कौन आ रहा है? मैं. तू मत आ. तू सेज है भाई. अरे हीलर तू भी है ना. अरे छोड़. हाँ मेरे पास रेस भी है. तो कोई और चेंबर तू आ. हाँ ओके. अपने लिए लगा ले ए पे. वाइपर है यहाँ. One close. I guess yellow. चलो वापस चलो. 2 लोग हैं यहाँ पे. Cypher's mid. अरे रेव. अभी नहीं दे. हाँ ओके. Healing you. I can't use that. वॉल कर. कवर दे. Your duty is not अबे. over. So what I need? चलो. जाओ तुम लोग जाओ. मैं मिड से आऊंगा.
अबे यार क्या One of these heal Viper. Close left. Nice. स्काई हील दे दे उसको. Rafter. Enemy down. One enemy remaining. Last rafter. Last rafter. Wall raised. अरे यार 120. Hunter. Nice. कर ले उसका. Last round in the half. दे मेरे को. We cannot keep our goods after this. Spend all. Thanks. Funds to spare. हाँ मेरे को वापस कर. नहीं काम कर, तू उसको ड्रॉप दे दे. स्काई को ड्रॉप दे दे. स्काई फुल शील्ड ले ले तू. I can buy one. I can buy हाँ one. चेंबर से ड्रॉप ले ले. स्काई ड्रॉप मांग ले. I got yous, okay? There's someone. अरे मेरे पास फेंका हुआ है. I couldn't have. My ultimate is not ready. Wall raised. Bomb buddy out. Hawk out. No charge blinding. Two shield. Spike planted. My ultimate. White trap is down. White trap is down. Seat bound. Enemy spotted A. See ya. Satchel out. One enemy remaining. Unknown. City. 80 tagged. Easy. Play easy. Exactly where you are. Drop down, please. Nice one. Well played. Switching sides. Now it's feeling good. I feel something over there. Can't place it. Like us, but इस राउंड मेरे पे यूटिल नहीं है, सिर्फ हील है मेरे पे. तो 9 ऊपर से गिर गए. 32 डैमेज दिए खुद को. डैम. टकराया नहीं उधर. ज्यादा टकरा गए उधर. नहीं हो पा रहा आज. we can push them back. ए Hawk out. Okay. B. Go B now. B. Spike मेरा ही कॉल planted. गलत था. 55 at Reina healing. हम ही गड़बड़ा दिया. Here's main. चेंबर इस तरफ आ, हील देता हूँ तेरे को. Healing over here. Multiple enemies beat. No more Viper. 55 on me. Yeah. Last player standing. Okay. They want to dance? I'll lead. I'm saving. I'm saving. भाग दिए यार हम वहाँ पे. क्या करूँ मैं ये बता. मैंने स्टिक किया, मैंने लेजिटली स्टिक किया. सेज उस केओ का एम मेरे पे लेके आया है. क्या करूँ मैं? 100 HP पे मरा हूँ मैं. थोड़ी you did well. अरे This is शांत जल्दी बैठ थोड़ी तू. ये लोग से तो We'll get this. Chill and play. मैं कोशिश करूँगा अगली बार में अट्रैक्ट नहीं करने का. Two here. अरे चेंबर पीछे आ भाई, तेरे को हील दूंगा मैं. मैं आ रहा हूँ. स्नोमैन आ रहा हूँ मैं. होल्ड कर. आजा पीछे. Nice.
planted. Away with you. गन ले ले गन उसका है. Reloading. Heal up, squad. Last player standing. Nice try. If you दोनों see को one of डिंग my करके creatures, छोड़ it's a दिया good बस. thing, alright? We'll figure out what they do eventually. मैं किचन वॉल कर दे रहा हूँ इस राउंड. या बचा के रखूं डिफ्यूज के लिए. Together. स्काई भाई बुलडॉग ही ले ले अगर कम से नेसेसरी होगा तो रखना वॉल. अगर नेसेसरी नहीं होगा यूज करना वॉल तो मत करना. कम. कि 3 लोग हैं एटलीस्ट ए पे. नॉइस. अबे आओ ना भाई. Last player standing. Spike planted. Once more into battle. Should have I'm not tired. played. Are Should you? have not played. Should not have played. चेंबर वो ड्रोन करता है क्या इधर क्लियर करने के लिए? No, no. हाँ? First rounds they didn't roll. बी है. 2, 3. They didn't check it. One dead. पीछे आ जा. पीछे आ जा. And 1 or 2. Begins. अबे 140. Cypher low, Viper. Toxin screen down. Last player standing. खाली एरो ही चमक रहा है स्काई की स्क्रीन पे हर जगह से. Match point. Let us see what they have planned for us this time. ये खराब कर दिया जरा. हम कर लेते. Through the calm, I see. Through the storm, I fight. Time to hunt. मेड है. ट्यूब. Enemy spotted B. Here. ट्यूब से गए. मिड से गए. अबे भाई. I know exactly where you are. Spike down. Defender spawn. Finished. There's another. हेल्प करना उसको. वाइपर. दोनों ए गए अरे वाइपर. इधर कोई नहीं. ए गए ब्रो. Spike planted.
वो नहीं, वो रोप है। कैमरा था? फक, हमको लगा रोप है। Last player standing. Attackers win. वेरी सैड यार, क्या करें? बुक रीड या एक और? वन मोर अटेम्प्ट एट सैडनेस। टेल मी, टेल मी, टेल मी। वन मोर ना, मेरे को भी लगता है। अरे ऊपर चला गया ऑफिस। जीत के क्या ये लोग? भाई भाई खेलना आ गया क्या? अरे साला, इतना सारा एमवीपी रोरशैक। ये तो दिस न्यू। Match found. सनसेट आना चाहिए था यार। क्या जेट खेलोगे? मैं कुछ और खेलूं क्या? प्लेयर तो दूसरा कुछ दे दो, मैं ओमेन खेल रहा। प्लेयर 2 अगर बेहतरीन एम है तुम्हारा तो सेज ले लो तुम। बेहतरीन नेम तो होगा जेट तो लोकेट। उससे बेहतरीन नेम का क्या लेना देना? तो फिर अपने को यूटिल डंप का उतना चिंता नहीं करना है। मिड देख लेगा ये और बाकी मारेगा भी जम के। हाउ अबाउट दैट? अब तो हो गया। If any of you got a problem with me, take it out on my double.
गाइस सुनो, हम लोग एम हेवन जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हो गया। तो साइफर तुमको बीमेन से भी आना है तो आ सकते हो। हाँ ब्रिज सन दे देना है रैम्स का। ब्रिमस्टोन यहाँ पे एक स्मोक दो, बस एक ही स्मोक यहाँ पे। स्पाइक ले लेना कोई, और साइड में जाना। एक और मिलेगा, एक और मिलेगा हेवन के आसपास। आजा आगे बी आगे। गो ब्रिम गो। Spike down B. Plant the spike. Cage triggered. तुम लोग सिटी पुश करो, साइफर नियॉन मिलके सिटी पुश करो। Last player standing. I have the spike. फिर से ही करते हैं, सेव करो और फिर से यही करो। ब्रिम का थोड़ा लेट हो गया था, वही प्रॉब्लम है। नहीं सेम करो, फुल सेव मारो और सेम चीज करो। That goes there. भाई सॉल्टेड पीनट्स का लास्ट वाला बैच जो आता है कितना ज्यादा सॉल्टेड है, वो सरप्राइज नहीं है, बस फैक्चुअली Now, सरप्राइज। where to set up shop? फैक्चुअली Last player standing. Spike down mid. ये राइट क्लिक के चक्कर में ना। Remember, bullets hurt. क्या करना, स्लो खेलते हैं ना एक बार। ब्रीच में हो नियॉन, हम लोग मीट जा सकते हैं, तुम लोग को अगर एमेन जाना है लेट। Yes, this should do. Breaks over. साइफर एमेन खेल लो या फिर This is a ब्रिम nice एक spot. मिड वैन स्मोक। Tripwire destroyed. Smoke's down. बी से पुश कर दिया शायद, तोड़ा है ट्रिप नहीं किया दूर से। नहीं किया। स्काई ए से रोटेट कर रहा है। ब्रिम आ जाओ, एक साथ जाते हैं। जाओ ए लो। Cage triggered. I'm out of here. सिटी चढ़ा नहीं हो। Smoke's down. ब्रिम एक और स्मोक कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं है उस पे। One enemy remaining. सिटी पे साइफर। और एक ब्लाइंड है दे दो। नाइस वन। Don't worry, the house always wins. Always. कोई बाय दे सकता है ब्रिमस्टोन? सेम कर रहे हैं, ठीक है। सेफर को अगर ए पे किल मिलते हैं तो ले लो। I'll show them. They gotta go.
My eyes are better. मत जाओ एक वैन से गोपी साइफर होगा साइड पे Our spike carrier is trapped. Spike down B. मत लड़ो प्लान कर दो Joke's over! You're dead! Where is everyone hiding? My ultimate is ready. One enemy remaining. 3 out of 5. Cage triggered. Cage triggered. They're on the back foot. Let's deliver another blow. Nice one. Reloading. That goes there. कोई भी नहीं है जो बिना तोड़े आ पाए। रेज आ जा उधर, ट्रिप लगा दिया मैंने, मैं चल जाऊंगा यहाँ से। नहीं नियॉन को यहाँ तक पहुँचा दो, फिर वॉक करके भी आ जाना। नियॉन को बस अकेला वहाँ पे छोड़ दो। स्मोक दे दो एक भी क्रॉसिंग। स्मोक मत देना फेंस पे। एक है फेंस से ए पे साइफर Stim beacon here. No more charges left. Reloading. My ult's ready. Plant the spike. Got one. लाइनअप है तो खेल सकते हो लाइनअप पे। तीनों हेवन। Enemy and defender spawn. Reloading. One enemy remaining. Nice run. After all, my ult's ready. I hate waiting. Let's do this. मैं कॉल दे रहा हूँ, सुनो निकल सकते हैं वो डाउन। साइफर तुम यहाँ पे मिड पिक देना, ठीक है? ब्रिम जब अल करेगा अपना ब्रिमस्टोन सुनो यहाँ पे अल करना तुम वेंस पे, ठीक है? जब हम लोग ए हेवन घुसेंगे तब अपने आप कर देना, मैं कॉल नहीं दे पाऊंगा, पुश टू होगा। Yes, this should do. यहाँ पे अल कर देना, ठीक है? यहाँ पे एनिमी वाला ब्रिम भागेगा। ब्रिम है बी हेवन पे। Reloading. Smoke's down. Stim beacon down. मेन खेलना थ्रो दे। Man, I have so many snacks. Spike This down room. B. One enemy remaining. मेरे पास एक गेमिंग का रूम हो, उसमें मेरा मेन मेन हो सकता है। कुछ भी खाने का सामान रखे वहाँ पे। Launching smoke. एक मेन देखो, एक सिटी हेवन We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Reloading. साइफर खेल रहा था पता है ए पे। भाई ब्रिम तू अल्ट किया ना वेंट्स पे, वो रेना इतना बुरा फंसा उसको बाहर ही निकल के आना पड़ा मिड पे। लेना मना ना। हाँ अरे फिर वो बाहर आ गया तो गनी से मार दिया मैंने।
ब्रिम स्विच कर लिया था उसके साथ पोजीशन इस राउंड। वॉक करेंगे फिर वॉक करेंगे यहाँ पे स्मोक दे दो साइफर तुमको ए पे पिक निकलता है तो देख लो या सेम प्रोटोकॉल अरे नाइस रे नाइस शॉट फिनिक्स सेफ है There. I know exactly where you are. One enemy remaining. Last player standing. भाई तंग करके रख दिया उसको It's great to see how frightened they are. Oh, this is a nice spot. They have nowhere to hide. A7 Spike down A. अलकड़ो ब्रिज अलकड़ो go vents bridge go not vents yet In beacon here. आ जाओ Reloading. जाओ B7 अलकड़ के घुस जाओ B7 अलकड़ के घुस जाओ कैंप होगा जाओ स्टेयर्स पे एक बंदा है Flash out. One enemy remaining. राउंड में आजा ब्रिज इधर फोटो खिंचवा You're not being shot at, you're doing something wrong. उनके बहुत सारे अल्ट है सब लोग स्प्लिट थोड़ा खेल लेते That goes there. ब्रिज हम लोग कैसे रह जाओ हाँ ब्रिम यहाँ पे एक स्मोक पे दे दो बस एक ही स्मोक ब्रिम अकेले हैं Drain a kill. My cage triggered. Where is everyone hiding? This! I'm out of here. Enemy I've got your trail. Another one. Spike down A. Two heaven brim 2 heaven Last player standing. Spike down A. $30 seconds left. Right between the eyes. In beacon down. cypher 120 है लेफ्ट पे हो सकता
10 seconds left. Got the spike. Where will they go this time? बहुत ब्रिंगर्स खा लिया यार. Can I get a job? Thanks. dinner. हाँ वेंट स्मोक कुड़ को बीमिन में घुसा अभी हम लोग आ रहे हैं मिड. Launching smoke. Cage triggered. Reloading. Door caught. Last player standing. क्या करे कोई कॉल तो नहीं हो रहा. ब्रिम के हल्के से एक हिल एक हो जाते हैं. साइफर मिड लर्क कर, बाकी सारे हम ए फास्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके. मिड लर्क कर मिड. ए साइड जाना है या हेवन? साइड करो प्रोबेबली. This goes here. ठीक है. ब्रिम तेरा कोई वो है क्या? लाइनअप है क्या कुछ? डाल दे करो. Joke's over! You're dead! बीच जाते हैं ना, बीच जाते हैं. साइफर ए पे है लगता है. हाँ दोनों ए पे. तुम लोग धीरे से एक घुस जाना एक्चुअली. छोड़ो. Tripwire destroy. Cage triggered. One enemy remaining. Here. नहीं कहीं और मिड तो नहीं है. सेव कर डाला. वो मिड ही था, वो उधर से आ गया बस. गड़ गया. हाँ मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा before the हूँ. switch. अच्छा लग था मेरे से. भाई जो भी फिनिक्स का अल्ट थोड़ा परफेक्ट टाइमिंग था भाई. मैं उसी समय पहुंचा जब थैंक यू. वेलकम. वो पहुंचा उस समय स्काई उसको गार्ड कर मिड रहा लर्क करने का कॉल किसका था? बस नियॉन की वजह से जीते एक्चुअली. अरे मैंने नियॉन को पार्टी पे बोला है. भाई नियॉन अब तो बड़ा हाथ मार दिया वो. अब क्या बोलना चाहता है तू? हेवन कट ब्रिम यहाँ पे स्मोक दे. Smoke's down. This beacon here. निकलो मैं तुम लोगों को पीछे से देख. My ult's ready. ए पे साइफर है. बी भाग सकते हो अभी भी. साइफर निकल जाओ हो सकता है.
player standing. बाप रे वो भी डर गया. Prepare for hellfire. Switching sides. They think they're so secure. That goes there. Go, go, go! Oh, this is a nice spot. ब्रिम को ए हेवन खेलना चाहिए क्या? किसी को वेंट्स खेलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास सेज नहीं है उधर. Spike down B. One enemy remaining. That's the lot of them. Spike spotted B. Get me in the line of fire. हाँ ब्रिम और सेफर उधर ही खेलो, हम तीनों इधर खेलते हैं. बी हुआ तो रिटेक है. This should do. Okay. Caution here. That goes there. Oh, this is a nice spot. They crash against our wall. Yes, this should do. Launching smoke. क्यों किया? दो स्मोक क्यों? ओह यहीं पे रेना दिखा. रेना और प्लेयर है. 3 लोग हैं यहाँ पे. Cage triggered. Spike down A. ए पे कोई मरना मत, ठीक है? नहीं तो मैं लो हूँ. मिट जा रहे हैं. मत नाम. Blinding. Careful now. Weak. One enemy remaining. Spike is A. Nice. Cage triggered. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Reloading. Next round. Reloading. Next round. This goes here. ब्रिम यहाँ पे एक स्मोक दो. ये राउंड यहाँ पे डायरेक्ट राउंड स्टार्ट होते. बी हुआ तो डिटेक्ट कर रहे थे क्या? Oh, this is a nice spot. Smoke's down. Flash out. Stim beacon here. बी ऑर्डर, बी ऑर्डर. Down you go. एक बी में है ना? नहीं एक मिड है. स्काई मिड है. Molly. एक सिटी आ रहा है. Last player standing. Spike planted. No, 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 गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया. एग्जैक्ट 0 बचेगा मेरे पास अगले राउंड में बाई करने के बाद. Tremor. Blasting. Give me a moment. I need to set back up.
किल का भी 200, वही 200 बचा था। मैं बी सेटअप कर रहा हूँ इस राउंड। Yes, this should do. ब्रिम बी मेन के लिए जब तक मैं ना बोलूँ कॉल ना देना, सॉरी स्मोक ना देना जब तक मैं ना कॉल गलती बोल दिया भाई। Oh, this is a nice. Yes, this should do. साइफर बी के बाहर ट्रिप लगाया। Guys, mid road, help. Brim don't pick, हाँ? रेना था बी के बाहर अभी। Camera taken out. Cage trigger. Of course, हम ही मर गए उल्टा। रेना सफर को पिक नहीं देना। रेना बी के बाहर। बी हो रहा बी से आ जाओ बी पे। क्यों नहीं पिक देना था भाई? मेरा वन वे है, हम खेलेंगे उसमें। Smoke down. हमारा टीम माथा खराब है, वो बोलते हैं ना निकाल के मन करते स्क्रीन से दो ए ओड़े भागो। ज्ञान देने वाला 14 लोग। Last player standing. मैं अटक 90 है, Brimstone 90 लो है। Spike planted. One enemy remaining. हल कर दो डिस्क ले लो, इधर ही होगा। Open up the sky. They think they're better than us. I can tell. Launching smoke. मिड पे Stim beacon down. बी हो रहा है बी स्मोक्स। वेंस हो रहा है वेंस। Nice. I've got your trail. Gotcha. Here we go. 30 seconds left. One enemy remaining. Spike down B. Thrifty. Well, that was embarrassing. Fight till the end, no matter what. That goes there. क्या हो? This goes here. Oh, this is a nice spot. ओ हाँ। Mid. Smoke's down. Joke's over. You're dead. I got enemies mid. हॉक Still got
ए जा रहे थे हेवन देख, मैं साइड जा रहा हूँ। दोनों ए जा रहे थे। बी पे रुको अभी। मैं लो हूँ बहुत। हाँ तू अटेम्प्ट मत करना मारने का, अगर वो मिस हो जाए तो। उसको देख के मारे। 117 है। 30 seconds left. बी हो रहा है। हेवन ये हो रहा है। सिर्फ फिनिक्स है। Ten seconds left. Last player standing. भाई साहब। Listen up. क्या तू क्यों नहीं मार पाया उसको? वो बेहतर था। अच्छा फेक कर रहा था। अरे हक दे, मैं 120 दे। That goes there. बाय करना, सेव करना, ये रहा। This goes here. Yes, this should do. No more charges left. ये होगा शायद। What? I know What exactly the fuck? where you are. They go. Take this. Reloading. I'm out of here. अरे क्या है? Spike planted. Last player standing. Satchel out. Three for me. Grenade. One enemy remaining. 4. उसको फिनिक्स बोला कि रेज आ रहा है साइड पे अभी। Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Reloading. That goes there. Oh, this is a nice spot. Right here. नहीं थोड़ा और आगे लगा रहा हूँ मैं। Here. Joke's over. You're dead. ये हो रहा है ब्रिम। ओ ये हो रहा है क्या? ओके। ब्रिज गो। पीछे मरियो मत। अल्टे अपना ब्रिज का अल्टे। My eyes are down. अल्टिंग। Prepare for hellfire. 51 sky. Spike planted. सेव कर लो ब्रिम, सेव कर लो पैसा भी। Last player standing. अरे ठीक है हम बहुत आगे, लेकिन ब्रिम बहुत डमफक जैसा खेल रहा है यार। खुद के राउंड में उस समय कैसे मर गया, आधा अधूरा इधर। अब आके चिपक के मेरे से खड़ा हो गया। हमको नहीं खेलना था यार वैसे एंगल। बाक हम मिस कर दिए उधर जब टूटा मेरा ट्रिप। बाक साला पूरा सेटअप में गांड घुसा के बैठ जा रहा है अपना। This match needs to end soon. This game needs to end soon. I'm over them.
बाय नहीं आ रहे तो लाइट बाइक मतलब इको करना है क्या? बोलो इको पुश कर देते फिर भी. This goes here. भाई बहुत लोग लो है, 3 लोग लो है. किंगस्टन 120, फिनिक्स लेना 120. बी मेन के पास स्पाइक गिरा है. हाइड ग्रीन तेरे पास हाइड. आएंगे. Got you. Camera taken out. ये ऑब्वियस हो गया रे ब्रीम अब. फिनिक्स के अलावा बाकी सब लो है, ठीक है. फिनिक्स हील कर लिया होगा. going है ब्रिज go fast go. स्पॉन से भागो. Why this door? Where is everyone hiding? Thirty seconds left. Cage triggered. Spike planted. चल अकेला ही Last player standing. One enemy remaining. One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay, it's fine. This is a nice spot. Mid or B. Open up the sky. Why destroyed? साइफर मिड पे भी बंद है. I've got your trail. Nice one, bro. Spike down A. Trick shots. Found you. Tripwire destroyed. साइफर रुक जा. रेस को आने दे. Spike planted. Grenade. Here comes the party. One enemy remaining. Enemy spotted A. मेरे को देना, मेरा अल्ट आ जाएगा. My thanks. My ultimate is ready. Spike defused. Nice one. Don't know what hit them. Yes, this should do. That goes there. This goes here. Yes, this should do. Wow, this is a nice. That goes there. Guys, वेंस कोई नहीं देख रहा है. मिड हो रहा है. फुल W मिड. Joke's over. You're dead. Enemy spotted B. Tagged. Spike down mid. Last player standing. Spike planted.
Launching smoke. मार स्पैम कर Match कत्लेआम हो रहा है यार My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. I need this. Neon drop देना My thanks. This goes here. Oh, this is a nice spot. Watch and learn. ब्रिम यहाँ पे डायरेक्ट स्मोक दो बी डिटेक्टेड है Yes, this should do. ब्रिम थोड़ा बी के साइड पे आ जाओ ना स्मोक दे ब्रिम ए पे है probably faking mid ओ नहीं ब्रिम ए पे Spike down mid. One enemy remaining. नाइस ये मिड पे था लास्ट अच्छा निकाला ये लोग Thirty seconds left. Okay. Nice one. Time for a protein shake. Switching sides. Overtime. Now remember, wipe the prints from your guns. It's just good crime scene etiquette. That goes there. This goes here. फिनिक्स सॉरी फिनिक्स बोल रहा साइफर ये मिड से हाँ मिड से आऊँगा मैं ट्रिप लगा दे रहा हूँ बस तुम लोग Oh, this is a nice spot. That goes there. I need to blow something up. Enemy spotted A. अरे दो लोग बैकस्टैब आ रहे हैं रेना और फिनिक्स Stim beacon down. फिनिक्स भी था उसके साथ फिनिक्स भी फिनिक्स मिड Gotta go. Bomb buddy out. Satchel out. Go, go. Enemy spotted A. ए जाओ आई मीन बी जाओ माय बैड दो लोग हैं यहाँ अरे जो ओडिन कर रहा है ना सिटी से उसको निकाल सकते हो वो आएगा ना इमिट अच्छा से पीक लेके मार दो उसको बहुत मेहनत है मारने में वहां से गाइस टाइम नहीं है 10 seconds left. भाई Spike कहाँ down B. Last player standing. अरे fuck Dog's ready. Joke's over. You're Switching dead. sides. Match point.
we know more than we did before. ब्रिम तू वेंट्स खेल, ए पूरा मेरे पे छोड़ दो. This goes here. Yes, this should do. That goes there. नियॉन खेलना है तो साइड खेल ले जाके. Many enemies, A. ठीक है, हेवन देख, अब हेवन देख. Careful now. My soul is scary. ब्रिम देखो, ब्रिम देखो. यहाँ पे एक स्मोक दे दो ब्रिम. My camera is destroyed. नहीं कोई नहीं है, साइफर कोई नहीं है, कोई नहीं. मत लड़ो. How did you 78? One enemy remaining. Sky 78, Sky planting. प्लांट कर रहा है, प्लांट कर रहा है. 78. Spike planted. Smoke's down. चलाओ सब इस ओडिन, नो ओडिन साइन पे ओडिन मारो. आओ फोटो खिंचवाओ. Switching sides. भाई अपने में ड्रॉ वाला नहीं है ना. भाई इतने फर्राटे में मैंने कंटिन्यू सेलेक्ट किया ना. I hate making new friends. कहाँ बी खेलना है या ए खेलना है इवेंचुअली? खेलते हैं क्योंकि वो लोग भी तो ऑडियंस स्पैम करेंगे ना. हाँ तो ये सेम करो जो कर रहे थे. ब्रिम करके उनका फ्लैंक को मारो. साइफर यहाँ पे वायर नहीं चाहिए, तुम वहाँ से मारो बस. ब्रिम और दोनों मिलके. ब्रिम तो अच्छा ठीक है. आवाज मत कर ब्रो, आवाज मत कर. जाओ बी निकलो अभी धीरे. अरे Last player standing. What a stance. Switching sides. Match point. अरे हम लोग का तो स्ट्रेंथ अटैकिंग नहीं था. हम लोग अटैक ही नहीं कर पा रहे हैं ये इसमें. प्रॉब्लम वही हो रहा है ना था. This goes here. अरे तेरे को वो मैच में मार रहा है तो तू उसको 1v1 के लिए रिवेंज में क्यों बुलाएगा? What kind of wrong trade is that? हाँ सब लोग 1v1 ले रहा है. सब साइड जा रहे हैं, अभी तक कोई हेवन नहीं आया. मैं बी को दिया. Spike down A. तीनों साइड. ब्लाइंड दो ब्रिज, ब्लाइंड दो बैक साइड. मारो ब्रिम मारो. हेलो रेना को शायद हेडशॉट लगा. Switching sides. भाई उनके टीम में कोई छटपटाया हुआ है ड्रॉ करने. Overtime. If they try. भाई इधर ही जीतना पड़ेगा, नहीं तो कोई ड्रॉ कर देगा.
this is a nice spot. इस बार सारे तुम लोग मिट जाओ यहाँ से। हाँ तुम जा लोग रहे मिट जाओ, जा मैं साइड जाता हूँ। मतलब तुम जाओ मन, हम लोग का देख लो, क्या पता बैकस्टैब आ जाए। अरे वो बैकस्टैब लगा दिया मैंने 20 है, मैं एक का देख रहा हूँ। Yes, this should स्मोक मत दो, बिना स्मोक के जाते। फंसा हुआ था क्या? मर जाएंगे। ओह स्काई ए पे है, स्काई आएगा भी हेवन। पीछे खेलो, लाइनअप पे खेलो, लाइनअप। साइफर तुम आराम से खेलो, ब्रिम साइड देख। अरे बैकस्टैब लगा है तुम लोग के लिए। हाँ साइफर आराम से खेलो, पूरा आराम से खेलो। मेरे पास ब्रिज का अल्ट है, ठीक है ब्रिज का अल्ट है। स्टन दो यहाँ पे, ब्रिज यहाँ पे स्टन दो अभी। नॉट येट, जब वो टैप करने आएंगे ना तब स्टन करना बॉम्ब पे, दोनों भी है। तब अल करना, अल करो। Last player standing. डिफ्यूजर को मार दे बस। अरे लो कोई नहीं, टाइम बाय आ One enemy remaining. Clutch. अरे पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा मैं हेडशॉट मार रहा हूँ और छोड़ दिया मारते। Switching sides. Match point. We doing this or what? पता नहीं वो क्या हुआ वहाँ पे, छूट ही गया सीधा। सर ओडिन लेके जो तू साइड का ट्रिप लगाता है ना उसको मारियो, मैं हेवन देखता हूँ। ठीक है, मैं चला गया था उस समय क्योंकि कोई और था नहीं। साइड पे तो हर बार फंस रहा, पता है। तू हेवन वाले को पकड़ना, ठीक है? यही बॉक्स के पीछे खेल, फंसेगा वो आके। हाँ। This is a nice spot. This goes here. मिड पे है, स्मोक के पास। ब्रिम केयरफुल। ओए फिनिक्स पुश किया हेवन। ओ नहीं, मैं साइड 120 है फिनिक्स। फिनिक्स के साथ कोई और भी था, फिनिक्स वाज नॉट अलोन। मत लड़ो ब्रिम, मत लड़ो। हेवन देखो, तुम्हारा हेवन देखो बंदा। जी ड्रॉ हो गया तो। बी। Last player standing. The hunt begins. Spike planted. भाई अभी कौन आता है? अब तो कोई कर देगा ड्रॉ। Switching sides. तो फिनिक्स। What did I say? Don't mess with me. एनीवे अब तो खेल नहीं रहे। बाप रे बाप, गिरते ही जा रहे हैं। प्लेट 1 में जाने वाले हैं अब तो। इसमें से कुछ खरीदना है क्या? वही देख रहे थे वैसा। कैन टेक दिस। अरे ये तो वो है ना, इथन किया था स्क्रीम को।
nice. I'll take this. छोड़ देना ना. Anyway, हम थक गए हैं तो अभी और बुक रीडिंग तो हम नहीं कर पाएंगे. कल होगा अब वो, होपफुली हाँ कल तो कल भी होगा वो. Anyway, चलिए वक्त आ गया है अलविदा लेने का आज के लिए. काफी इंटरेस्टिंग दिन रहा. काफी लोग आए बुक रीडिंग सुनने के लिए भी. I saw that time you guys were chipping in. Anyway, चलो फिर आज के लिए इतना ही. गुड नाइट. शब बखैर, शुभ रात्रि एंड जय श्री राम.